responsibilities related to the MOOCs in the university. अभी सर ज्वाइन कर रहे हैं कुछ लोग और जस्ट ओके सर, आई एम वेटिंग, नो इशू। जैसे हो जाए। नहीं सर, मैं थोड़ा ब्रीफिंग कर दूं कि सर द फर्स्ट डे डॉक्टर राजेश एनसीईआरटी से उन्होंने डिस्कस किया था डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेरी गुड। He discussed number of very important topics. Then the same day we were having the crafting engaging MOOCs. Dr. Kiran Lata from Lucknow University. He has developed number of MOOCs for the government as well और बहुत ही trained teacher हैं। Crafting engaging MOOCs तो उन्होंने कई सारी topics पर बात की थी, including 4 quadrants and how to develop, how to move on. एंड 31 मई को सर हमारे प्रोफेसर KS कुसुमा थे मास-कॉम जामिया इस्लामिया से। He discussed about script writing, OBS, video recording and editing. Same day we were having Dr. Atul Sinha again from mass-com from this Jamia Islamia. He discussed creating animation clips using PowerPoint and screen recording. 1st June, we were having 2 sessions for Professor K. Srinivas. He discussed about conceptual design, inputs for design, develop and deliver with 4 quadrant pedagogical approach. You can imagine the wonderful speaker, sir. And the second session was continuing with the learner-centric video e-content development. बहुत अच्छी applications उन्होंने reflective questions and how to develop the videos वगैरह बहुत सारी अच्छी बातें की सर. And 3rd June को we were having Dr. Gopal Ram from Jamia JNU. And we were trained by Professor Srinivas in NIPA. He is a very nice guy. He discussed about LMS Moodle overview through Genomio. बहुत सारी उन्होंने utilities discuss की, how to log in, how to invite, how to enroll the students, how to share वगैरह the material and so on. LMS Moodle overview through Genomio. And same day we were having Dr. Deepak Bishla from Ambedkar University, very nice speaker, more than 500 talks he has delivered and qualified in computer MTech and New Zealand से शायद PhD की है. He discussed about AI powered online collaborative learning tools, wonderful tools जो कि e-content develop करने के आपके बहुत काम आ सकते हैं. अभी तक सर इतना काम हम कर चुके हैं सर, और इसी डायरेक्शन में बस मेरी आपसे अपील है कि फ्रेंड्स, सर विल बी स्पीकिंग ऑन ई कंटेंट डेवलपमेंट एंड ओवरव्यू ऑफ स्वयं के बहुत सारे एप्लीकेशन से डिस्कस करेंगे सर. इसमें अगर वक्त अलाउ करे तो EOI एंड गाइडलाइन, EOI एंड इंसेंटिव्स फॉर MOOCs. मुझे याद है जब एक बार कवर इट सर, वी विल ट्राई टू कवर इट, बट कवर नहीं, बस वो एक PDF फाइल है ना सर, उसमें जो आपने कहा था कि अगर इस पे बढ़ो तो बड़े आराम से कार खरीद सकते हैं. You have kudos to you sir, you have arranged and invited so many distinguished speakers and by the time I think that the listeners are very much, or the participants are well set to take on the lecture which I am going to deliver. So I am in a comfortable position and they know the background. हाँ, so sir, I'll be talking from here on. Sir 2 मिनट और दीजिए. Concern the issues related to EOI and other things, other related. Sir 2 मिनट और दीजिएगा. बिल्कुल sir. Friends, Professor Asim Zafar is the professor at Computer Science Department of the Aligarh Muslim University. He holds Master in Computer Science and Applications and obtained the degree of PhD in Computer Science from Aligarh Muslim University, Aligarh. इसके अलावा sir was on an international teaching assignment in King Abdulaziz University, Jeddah for 5 years, and number of projects was completed by Professor Zafar. Unlimited sir का experience and achievement है friends.
He is a valuable resource person and delivered skill-based technical sessions, lectures across the country for faculty development programs, FIPs, refresher courses, orientation programs, especially speaking on the topic e-learning, SWAYAM Moocs, e-content development, capacity building for blended learning, educational technologies for online teaching and learning. और more than 5,000 teachers have been trained. अब तो फिगर और ये बहुत बढ़ गई होगी during COVID-19. तो मैं बोलता जाऊंगा, मेरे ख्याल से आधा घंटे से ज्यादा लग जाएगा. Thank you so much, sir, for accepting my request. My gratitude to you, sir. Now, friends, sir, ये लोग सभी टीचर हैं joining from different part of the country. और बहुत ही मैच्योर टीचर हैं. You will find them very interesting participants. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much, Professor Asim Khan Saab, and thank you very much for the kind words you have delivered over here for me. And participants, as you know, that Professor Khan is a very sincere professor, I will say, and whenever he takes any assignment, he completes it very sincerely and meticulously. You might have seen that the speakers he has arranged for or invited for this workshop are the tremendous one, the distinguished speaker in the field. And that is basically the effort from our side, from AMU side. Whenever we conduct something, we should conduct in such a way that the participants must go away with some takeaway from here. There should be some solid outcome, I mean to say, for these programs. It is not like that we are coming over here, delivering the lecture, and you are listening to the lectures and going home. No, the effort from the Khan Sahib is that he tries that whenever you complete the things over here, we complete the course, you should at least know the topic or the related things which are being discussed over here. So that is the sincerity of Khan Sahib. Thank you very much, Khan Sahib. And dear participants, a very good evening and assalamu alaikum to all of you. I hope, am I clearly audible to anybody can confirm, please? Yes, sir. You are audible. Yes, sir. So Yes, sir. allow me please share my screen, and I hope my screen is visible to all of you. Please confirm. Yes, sir. So basically we will be talking about e-content development for the SWAYAM platform, and if time allows, we will see the complete life cycle of Moocs courses. Apart from that, we will discuss what is the need for online teaching and learning. As all of know that at the time of COVID, we were left with no option, or you can otherwise you can say that we were compelled to go for online teaching and learning mode, because this was the only mode using which we can interact with our students just to safeguard their academic losses or their academic sessions, you may say. So just to try to minimize the academic loss of the students, we were engaging the students in the online mode of teaching, and there was no other mode of interaction available in that period of time. But fortunately, we have come out of these periods, and nowadays it is possible to interact with the students in the face-to-face mode of the students are back to their classroom. We are interacting with the students in the class as early as we were used to of interacting with the students. So the question arises in our mind, sir, if we are interacting with the students in the face-to-face mode of learning, then what's the need of online teaching and learning? So we'll try to elaborate what is the need of online teaching and learning nowadays, if it is possible to interact with the student in face-to-face mode of teaching. Another thing, we will discuss what is the role of synchronous and asynchronous mode of communication in online mode of teaching. Next, we will see how we can supplement online teaching and learning through open educational resources or through Moocs. What are the various e-content development initiatives taken by the government? We will see particularly open educational resources. We will take an example of EPG Pathshala. And after that, we will move on to Moocs. That is a different educational space, massive open online courses. So we will see what are the various platforms of Moocs. And specifically, we will be discussing about SWAYAM platform for installing your Moocs courses, or for uploading your Moocs courses, or for accessing the Moocs courses over here. Further, we will say what kind of massive open online courses are available on the SWAYAM platform. Generally, they are known as the SWAYAM courses.
So when the SWAYAM courses are announced and what is the process of enrolling ourselves towards the SWAYAM courses, and even as a teacher, if you want to develop some SWAYAM courses, what is the process for that? We will discuss all these things. Apart from SWAYAM, there are several other platforms for uploading MOOCs, and we'll have an bird's eye view of these platforms over there. And at last, if anybody of us is interested in developing MOOCs, so what are the process for developing MOOCs? As Professor Khansa was telling me that we will discuss expression of interest, that is EOI, how we can apply for the development of MOOCs, and what are the funding resources or funding possibilities for development of MOOCs that we will see. And at last, we will try to discuss the complete life cycle of MOOCs courses. Before we go on discussing the MOOCs, the first and foremost thing is that what is the need for online mode of teaching? When we do have the students in our classroom, we can interact with them in the face-to-face mode of teaching. Why do we need this online mode of teaching? That we will discuss at the first phase, and then we will move on to the latter part of our agenda items. Participants, am I clearly audible to all of you? Please confirm anybody so that we can continue. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. Okay, sir. There is a UGC regulation, dear sirs or participants. UGC regulation tells it was initially made public on 2016, and later on that was revised on 2017, and now do have UGC regulation 2021. So the recent version is 2021. And as per the UGC regulation, it says, clearly says that a student can complete up to 40% of credits of their courses through online mode or through SWAYAM courses, you can see. Specifically, if you are talking about SWAYAM courses, so by doing SWAYAM courses, they can earn up to 40% of the credit. What do I mean to say by doing all these things is that, say for example, you allow a student to get a bachelor degree in your university if the student has completed 100 credits. For example, I am taking, in most of the cases, it is 160 credits, somewhere it is 180 credits, somewhere it is 140 credits for complete duration of 3 years or 4 years program. Just for an example, and for the sake of convenience, I am taking, say for example, you allow a student to obtain a degree after 3 years or 4 years, whatever duration of the course is there, after earning 100 credits. I mean to say कि जब लड़का 100 क्रेडिट उसका हो जाए 2 साल या 3 साल के कोर्स में, तो आप उसको ग्रेजुएशन की डिग्री देते हैं. As per this UGC regulation, the student can or may earn up to 40% of credit. 40% of credit means वो 40 credit अब क्या कर सकता है? Up to 40 credit he can earn by completing online courses which are available on SWAYAM. That is known as SWAYAM courses. So by completing SWAYAM courses, the student may earn up to 40 credit. 40% means 40 credit. बहुत से courses, there are some courses which are of 4 credit. There are some courses which are of 2 credits. Some courses are of 3 credits and like that. For the sake of convenience, I am telling that, say for example, if one course is of 4 credit, then UGC regulation says that a student can complete online courses on the SWAYAM platform, 10 SWAYAM courses, 10 into 4. If every course is of 4 credit, then he or she can complete up to 40 credit, means 10 courses from SWAYAM courses during the period of their degree, during the duration of their course. That may be during the duration of their program. I mean to say, program means maybe 3 year, 2 year, whatever duration is there. So during that, if you're talking about the bachelor degree, old bachelor degree for 3 years. If you're talking about FYP, new bachelor degree, that is 4 years. तो UGC regulation ये कह रहा है कि 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर up to 10 courses, each of 4 credit, लड़का कहाँ से कर सकता है? स्वयं से कर सकता है. And rest of the part means 60% credit he or she will earn by completing the course in the face-to-face mode of teaching or the traditional mode of teaching, which is available in the campus. तो कैंपस में वो 60% क्रेडिट करेगा और बाहर से कर सकता है. करना जरूरी है ऐसा नहीं है. He or she can do up to that course.
तो इट्स फाइन कि चलिए सर 10 कोर्सेज तक कर सकता है। 10 कोर्सेज का मतलब पहले साल में उसने या फर्स्ट सेमेस्टर में उसने 2 कोर्सेज कर लिए, सेकंड सेमेस्टर में 1 किया, तीसरे सेमेस्टर में उसने 1 कर लिया, चौथे में अप टू 10 कोर्सेज ही कैन डू अप टू 3 ड्यूरिंग द 3 years ड्यूरेशन ऑफ देयर प्रोग्राम। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? व्हाई ए स्टूडेंट विल गो फॉर स्वयं कोर्सेज इफ a teacher is teaching all such kind of courses in the face-to-face mode of teaching? Why online courses are required? Why do we need MOOCs? Why do we need SWAYAM courses which are available as MOOCs in the SWAYAM platform? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? What happens basically, I have seen a lot of degree colleges. We're not talking about the big universities like MU, BHU, where a lot of disciplines are there, a lot of teachers are there. Say for example, in some degree colleges, I have seen that a physics department, I am taking this as an example, physics department is there. And that physics department is being run only by only teacher. There's only one teacher who is available over there. In some departments, there are no teacher. Very pathetic condition is there of many of the degree colleges which are available in the rural areas or in the part of area. And even in some of the very good degree college, say for example, we are talking about physics, and there are 10 teachers over there. And there is a course on quantum physics. It may happen that out of these 10 teachers, nobody is competent enough to teach this course. They don't have the specialization to teach this course. So in many places, we do have a lot of courses for which teachers are not there, expertise are not there. Teachers are not trained to these courses. And a lot of courses are being introduced in the modern day of time. So I'm taking an example, maybe quantum chemistry, maybe quantum physics, maybe another courses you can name. And say for example, expertise are not available, teachers are not able to these courses. Then what will happen? Either the student will suffer, he will, there is nobody to teach that course, so he will not learn anything about that course. So student must suffer, or there are another opportunity, there are another option that these students can enroll themselves in such a program or in such a course which is available on SWAYAM platform. So say, for example, the student goes to the SWAYAM platform and he searches about that whether any course on quantum physics is available or not. And fortunately enough, he finds that, okay, there are 2 courses which are available for quantum physics. One is being taught by a professor of IIT Kanpur, another is being taught by a professor of IIT Bombay. Now it is up to that student. He can enroll in any of these courses over there, either being taught by a professor of IIT Kanpur or being taught by IIT Bombay. So sitting at his own place, अपने ही गांव में अपने घर पे रह करके, the student can learn these courses for which the expertise was not available in his or her college over there locally. तो इसलिए ये जरूरी है कि स्वयं or the government has made a provision for such places where the expertise are not available, the students should not suffer. There is an option over here, option available for them, that they should go to that place. Place means they can go to the internet, some platform. There they can find a lot of courses are there. Out of these, they can select any of the courses of their choice for which the expertise are not available in their college. So that is the need. I mean to say that even if you have resorted back to the face-to-face mode of teaching, online mode of teaching is not going away from us. It is going to remain with us forever, I mean to say. Nowadays, initially the cap was of 20%. Whenever the regulation 2016 was announced, it says that a student can do up to 20% of the courses from SWAYAM platform. In regulation 2021, UGC regulation 2021 says that a student can earn up to 40% of the courses from SWAYAM platform. So you just see here, we are not going to get away from the online mode of teaching. So that is the need over here. Now, as a teacher, what we will have to do, whatever changes are taking place around us in the educational space, we will have to adopt to that changes. Those who cannot adopt will become obsolete in one day or other time. So we will have to keep on updating ourselves with all these happenings which are coming up over here. So I mean to say that is the need of online courses. Fine. We are convinced that, okay, online courses are going to remain over there, and we'll have to, or our students will take or may take
any of these courses for which the expertise are not available in their college. Fine. So that they are not deprived of such kind of upcoming courses which are nowadays being introduced, and they are of relevance, I mean to say, to their program or to their courses or to the industry or to the research arena, whatever you may say. Another thing is that why so now with this discussion, it is okay that sir, in one form, other form, online mode of teaching is going to remain there. We are not going to get away with this online mode of teaching. तो किसी form में ये रहेगा. चलिए यहाँ तक तो बात हो गई. Now come to the another area. Whenever we are talking about online mode of teaching, the important thing is that we need to communicate with our students. How can we communicate with our students? So there are two modes of communications. Whenever we're talking about online education or online mode of teaching, there are two modes of communication. Communication means we can communicate with the student in two different ways. Number one is known as synchronous mode of communication. What happens in the synchronous mode of communication? Both the parties who are communicating with each other, means students and teacher, need to log in into the system in the same span of time. Say for example, in our case, it has been told to you earlier that Professor Asim Zafar will be engaging your course or engaging your program or engaging your session from 3:30 to 5 p.m. So it is imperative for both of you as well as for me that both of us should log in into the system during this period of time from 3:30 to 5:30. Then only the communication will take place. So such kind of communication where both the parties are logged in into the system or remain logged in into the system are known as synchronous mode of communication. So it is imperative for both the parties that they remain logged in into the system during the communication. And examples are either we can communicate with each other in either using Google Meet, or sometime you might be using Zoom, sometime you might be using WebEx meeting, sometime MS Team. There are a lot of software which are available, video conferencing softwares, using which we can communicate with students in the synchronous mode of communication. Another mode of communication is that asynchronous mode of communication. In asynchronous mode of communication, it is not necessary that both the parties logged in into the system in same span of time. Say for example, I am just writing a message, I'm writing a mail to my friend who is in UK. So it is not necessary that both me and my friend should be logged in into the system in the same span of time. It is not necessary. I have written the mail whenever I have leisure time, whenever I am free, and whenever my friend logs into the system, he can see the mail or check the mail. So in asynchronous mode of communication, it is not necessary that both the communicating parties logged in into the system in the same span of time. It is not necessary. Examples are email, discussion forum, Google Classroom, Moodles. You might have seen, you might have used the Genomio Moodle. So what do we, there are a lot of activities related to teaching and learning which we can perform using Moodle. One such activity is that we can share the study material or the courses with our students. So what does the teacher do basically? He or she uploads the teaching material on the Moodle, and students, whenever they log into the system, they find that, okay, Professor Asim Zafar has shared this kind of material with us, or sir, our teacher has shared this teaching material with us. So in these mode of, both the mode of communications are essential for successful online communication. What happens here? If I want to share something in the Google Meet, if I want to do something, say I want to share some course material in a structured way with you, that is not facilitated in a very good way in, by video conferencing softwares. They are only meant for interacting with the party, interacting with the learners, or interacting with the students in a two-way communication, I mean to say. But if you want to share something, if you want to conduct some examination over there, if you want to conduct quizzes, or if you want to share some material with them, for all such kind of thing, we need another mode of communication that is known as asynchronous mode of communication. So both the mode of communication complement each other. So for online mode of teaching, we do have, or we do need both mode of communication, that is known as synchronous and asynchronous. Using synchronous, we can interact with the students in the
Real time. Real time means both the parties are logged in into the system in the same span of time. While if you want to share something, so that whenever the students are free, they can see the material, they can read the material. So if anything you want to share with them, you can do it in the asynchronous mode of using asynchronous mode of communication. Examples are email, discussion forum, Google Classroom, Moodle, and for these it is not necessary that both the parties are logged into the system. So these two modes of communication are there. You should keep in your mind, and that we will use in the latter part of our discussion. Now come to a research survey. Basically, it has been found by some of the educational scientists that whenever we deliver a lecture in the lecture mode, I mean to say, whenever you are teaching something in the lecture mode, just I am using a lecture mode of communication. We go to the class, deliver a lecture, and come out of the class. Then it has been seen that the memory retention is around 25 to 30%. What do I mean by saying that? Is that if you are giving the lecture, or if you're teaching the students in the lecture mode only means you're going to the class and delivering a lecture. I may be a very good speaker, you may be a very good debater, so you go into the class, give a lecture, and come out of the class. Then it has been seen that kuch dino ke baad, they can hardly remember 25 or 30% of the content which you have delivered in the class. But if we teach the student or give the lecture with the help of certain PPT or certain maps or certain pictures you are showing them, certain models you are showing them in the class, then the memory retention goes beyond 50%. It has been seen over there. I mean to say that your teaching method becomes more effective if we use some PPT, some maps, some simulations, some models, and like that. If you show during the lecture, then the memory retention, बच्चों की याद करने की क्षमता, उसको समझने की क्षमता चली जाती है more than 50% or 60%. But if we use videos, simulations during our teaching program, then it has been found that the memory retention goes beyond 70 to 80%. If we use some simulations, some videos, quality video, I mean to say, you just remember the word quality. I'll be discussing this thing in the latter part of my discussion. So if we have, or if we use some quality video during your teaching program or teaching sessions, then it has been found that the memory retention goes beyond 70%, 80%. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने लेक्चर में अच्छा सिमुलेशन दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, तो बच्चों को समझने की क्षमता और उसको याद रखने की क्षमता कितनी बढ़ जाती है सर? 70 to 80% तक चला जाता है. यहां तक सर बातें समझ में आ रही हैं आपको सर, या कुछ और प्रॉब्लम है तो बताइए थोड़ा सा. ठीक है सर. ठीक है, ओके. तो कहने का मतलब ये हुआ कि अच्छा ठीक है, देयर आर 3 मेथड्स. एक तो है कि जस्ट गो टू द क्लास, गिव अ लेक्चर ओनली. Another thing is that if I'm going to the class and I'm using PPT, maps, models, and I'm showing them and I'm trying to explain the concept with the help of these things, then the memory retention goes. I mean to say, our teaching and learning process becomes more effective. Further, if we use simulations, quality video in our lecture, then the memory retention goes beyond 70 or 80%. तो लोगों को समझने का और उसको याद रखने की क्षमता क्या होती है सर? बढ़ जाती है. तो बोलिए तो ठीक है सर. बट द क्वेश्चन अराइजेस कि देखिए सर, जहां तक पीपीटी की बात है, वी आर टीचर एनफ. अभी सर आए थे, सर ने बताया अभी कि पिछले क्लास में उन्होंने बताया पीपीटी, और हम लोग भी सर वर्ड यूज करते हैं, पीपीटी बहुत दिन से बना भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं. अब आपने एक नया चीज लाया, बोल रहे हैं कि इफ यू यूज सिमुलेशंस एंड वीडियो, और वो भी आप लगाते हैं एक टर्म, एक स्पेसिफायर लगा रहे हैं, क्वालिटी वीडियो, देन द मेमोरी रिटेंशन विल गोज और द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस बिकम मोर इफेक्टिव. बोला ठीक है, आई एग्री विद दिस थिंग, बट सर आई एम teacher of physics, I may be a teacher of Urdu, I may be a teacher of economics, I am master of my subject, but I have not been taught and I have not been trained to make quality video. आप तो यहाँ बोल रहे हैं कि वीडियो भी नहीं होना चाहिए, क्वालिटी वीडियो बनना चाहिए. So what do you mean से क्वालिटी वीडियो? चलिए क्वालिटी वीडियो हम किसी तरह से बना भी लें. अभी सर ने बताया कि OBS हमको बताया गया है, तो यूजिंग द OBS और द स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर्स वी कैन मेक वीडियोस. चलिए अपने अपने लेक्चर का हमने छोटा सा वीडियो बना लिया एंड वी आर गिविंग इट टू द स्टूडेंट्स. लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, इससे उतना काम नहीं चलेगा. यू मस्ट हैव द क्वालिटी वीडियो विच हैज ग्रेटर इंपैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स. तो बोलिएगा सर, ये क्वालिटी वीडियो बनाने के लिए ना तो हमको ट्रेनिंग है, ना हम उसके लिए सुटेबल पर्सन है, बिकॉज आई एम टेलिंग यू दैट आई एम सब्जेक्ट ऑफ माय मास्टर.
है ना. I am a subject of my, say for example, I am a teacher of economics, so I am a master of my subject, economics. I know physics, I know Urdu, I know Hindi, I know Sanskrit. But as far as these things are, the technical things are there, how to make quality video, how to make simulations, I am not used to that. तो बोले ठीक है सर, ये तो बात, लेकिन हम एग्री करते हैं आपकी बात से कि if we use these things, simulations and video, etc., quality video in our teaching, the teaching and process becomes more effective. ये तो हो जाता है. तो बोलिएगा सर इसके लिए क्या है. तो गवर्नमेंट हैज सेंस्ड दिस रिक्वायरमेंट दैट ओके फाइन, टीचर्स आर नॉट ट्रेन्ड एनफ टू मेक द क्वालिटी वीडियो. तो उन्होंने क्या किया, बोला कि ठीक है, ये जरूरत तो है हमारी. तो गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड ए प्रोजेक्ट, और उन्होंने क्या किया, दे हैव इनवाइटेड subject experts from all across the country, all across India, and they have invited more than 4,000 teachers from different subjects. Subjects means chemistry, physics, economics, law, and like that. तो 70 सब्जेक्ट के more than 4 टीचर्स को उन्होंने इनवाइट किया इन ए स्टूडियो एट चेन्नई. और वहां पर क्या किया सर, उन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स पे, हर सब्जेक्ट के डिफरेंट टॉपिक्स पे, हर सब्जेक्ट में पेपर्स होते हैं, हर पेपर में कुछ ना कुछ टॉपिक्स होते हैं. तो उन्होंने मोर देन 30,000 टॉपिक्स पे क्या किया, दे हैव क्रिएटेड वीडियो लेक्चर्स, एंड ऑल दीज वीडियो लेक्चर्स वे आर मेड अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एट ए डिजिटल स्पेस दैट इज नोन एज रिपोजिटरी. कहने का मतलब है कि 30,000 से ज्यादा वीडियो लेक्चर उन्होंने 70 सब्जेक्ट पे बनवाया एट देयर ओन कॉस्ट. ये गवर्नमेंट ने कॉस्ट बियर किया. और किन लोगों ने बनाया सर, उन्होंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट को बुला लिया था, एंड ऑल द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स वी आर प्रोवाइडेड टेक्निकल फैसिलिटेशंस बाय, वहां पे फोटोग्राफर थे, एडिटर थे, सो टेक्निकल फैसिलिटीज वे आर प्रोवाइडेड टू देम, एंड यूजिंग देयर टेक्निकल स्किल्स दे डेवलप मोर देन 30,000 video lecture on various topics, and they were made available on a platform, internet platform, which is known as repository. In common terms we call them OER, open educational resources, and these open educational resources are freely available on the internet, and we can go to that site and we can use it. कहाँ है ये सब सारी चीजें सर, अगर हम देखना चाहते हैं. ये सारी बातें अभी जो मैंने आपसे करी सर, यहाँ पर लिखा हुआ है, a picture is worth 1,000 words. Do videos improve learning? Yes, videos improve learning. देखा गया कहाँ पर, in a recent survey 92% of students reported that videos have positive impact on their education. हमने आपको और जो चीजें बताई वो सारी चीजें हैं यहाँ पे. In support of my first statement which is written over here, a picture is worth 1,000 words. Just I want to reiterate that you see here the pictures, the models are very effective in the teaching and learning process. Say for example, 2 साल का एक बच्चा है, and that child has never seen an elephant. उसने हाथी कभी सर देखा नहीं है, मान लीजिए, and you as a father or you as a teacher is trying to explain him how does an elephant look like. आप 3 दिन तक कोशिश करते रहो उसको समझाने का कि बेटा, do you know elephant have very big legs, their legs are like poles, they have the trunk, they have very big ears, and so. And there will be mammoth body is there. The concept of elephant will not be very clear in the mind of the student, in mind of the children who has not seen elephant. You are just trying to explain him with the help of words. आप लेक्चर देके उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं होगा. What you do after 2 or 3 days, you just simply show him a picture of the elephant. Then the student will simply learn. Oh, बोले पापा, why are you trying wasting so much time? आप हमको पहले दिन दिखा देते. Now I got it. How does elephant look like? The concept of the elephant becomes very clear the moment that a student or that children sees the picture of an elephant. तो जो आप 3 दिन में नहीं समझा पा रहे थे, दिन भर बता करके, वो सिर्फ एक पिक्चर दिखा करके क्या सकते हैं आप उसको, उसके कॉन्सेप्ट को ठीक कर सकते हैं, समझा सकते हैं. So I mean to say the learning process becomes more effective when you use pictures, models, videos in the teaching and learning process. That's why it is say that a picture is worth 1,000 words. खैर सर, ये बातें तो हम लोग एग्री करते हैं कि हाँ सर ठीक है, कि ये तो बात सही है, और ये आपने बताया कि एजुकेशनल रिसर्च से भी प्रमाणित है कि अगर आप यूज करते हैं पिक्चर्स है तो मेमोरी रिटेंशन गोज लाइक दैट. आपने बताया कि इफ यू आर यूजिंग मैप्स एंड PPTs etc. goes beyond 40 to 50%, 60%, and if you are using quality video and simulations in our teaching and learning process, it goes beyond 70 or 80% over there. That is a fact. और कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, उसके लिए भी आपसे हमने बताया कि there is one such attempt by the government of India
that is, you can say, Ministry of Education. They have taken the initiative and they have invited how many people? More than 4,000 subject experts belonging to 70 different subjects from across various parts of India. And they gathered at one place in the studio at Chennai, and they were provided all technical facilities over there, facilitations over there. तो वहां पर कैमरामैन था, एडिटिंग था, प्रोफेशनल्स थे, सारे लोग वहां पे थे. The teacher has to give the intellectual input only. टीचर को सिर्फ अपने सब्जेक्ट के बारे में बताना था कि देखिए भाई ऐसा ऐसे ऐसे करके बना दो. I mean to say, all of you are very much aware with the film making. फिल्म मेकिंग में क्या होता है सर? एक स्टोरी टेलर होता है, एक डायरेक्टर होता है, बाकी फिर एक्टर्स होते हैं, और बाकी उसको मदद करने वाले जैसे कैमरामैन है, एडिटिंग करने वाले लोग हैं, वीडियो बनाने वाले लोग हैं, टेक्निकल स्टाफ्स होते हैं. सो ऑल ऑफ दीज वर्क टुगेदर टू मेक अ फिल्म. सो सिमिलर काइंड ऑफ अटेम्प्ट इज ओवर देयर. बट इन दिस केस, यू एज ए टीचर, यू आर द एक्टर. आप ही को खड़े होकर के लेक्चर देना है. यू आर द स्टोरी टेलर. यू बेटर नो कि आपको क्या पढ़ाना है. एंड यू आर द डायरेक्टर. You better know how I can make my students convinced, or how I can make the concept which I am trying to explain to the students more clear to them. तो ये डायरेक्टर भी आप हैं. The only thing you need, or only support we need is that, सर हमको वीडियो बनाना नहीं आता है, हमको एनिमेशन बनाना नहीं आता है, उसके लिए टेक्निकल फैसिलिटेशंस है. वो आपका वीडियो भी बना देंगे, एडिट भी कर देंगे, जिस तरह का सिमुलेशन बोलेंगे उस तरह का सिमुलेशन भी बना देंगे. एंड ऑल दीज थिंग्स are made in the form of a video lecture, and that video lecture has been put in a place that is known as open educational resources. They are available, freely available. One such EOR or OER is EPG पाठशाला के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था. तो EPG पाठशाला सर हम लोग आपको दिखाते हैं. तो for that we will go to Google. So simply go to sir Google, and sorry, it is already, we are already in Google. Here is simply write on EPG Pathshala. The first thing you will see EPG Pathshala. Please confirm my screen is visible to all of you, sir? Yes, sir. तो EPG पाठशाला यहाँ पे Yes, sir. आप EPG पाठशाला को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये EPG पाठशाला का होम पेज है. अगर राइट हैंड साइड पे देखें तो लिखा हुआ है MOE प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये प्रोजेक्ट है. एंड द कंप्लीट नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT. इसी प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा था. यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि टीचिंग एंड लर्निंग, ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड है. यू कैन सी ओवर हियर दैट e-books are there, online courses are there, offline access is there, everything is there. I was talking about this thing, uploaded courses or subjects. So you can see here more than 70 subjects पे more than 30,000 video lectures यहाँ पर मौजूद है सर. Say for example I am showing you economics की बात करते हैं सर. यहाँ देखिए economics, फर्स्ट कॉलम पे देखिएगा सर, पांचवा चैप्टर इकोनॉमिक्स. यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लिखा 567. कहने का मतलब है कि economics सब्जेक्ट है, economics is a subject, and in this subject we do have 567 video lectures on various topics related to economics. Similarly, if you are talking about chemistry, you just see here sir, in chemistry last column देख पाएंगे सर, we do have 565 video lecture on different topics related to chemistry. Similarly, in botany we do have 176 video lecture. तो बोलिए ये तो ठीक है सर, हाँ अच्छी चीज है, आप किसी में दिखा दीजिए थोड़ा सा, किसी में अगर दिखाना चाहते हैं तो. मान लीजिए you see here sir environmental sciences. If you can see over here environmental sciences, there are more than 530 video lectures available over here. Simply click it. Just we want to show or we want to see what are the video lectures available here. तो यहाँ सब्जेक्ट का नाम देखिए सर लिखा हुआ है environmental sciences. I have already told you that in every subject we do have certain papers. तो देखिए सर यहाँ बहुत से पेपर्स हैं. These are the name of the paper. Ecosystem structure. On ecosystem structure we do have 18 lecture. On analytical chemistry we do have 26 lectures. In biodiversity and conservation we do have 35 lectures. Similarly, in on environmental geology and like that. So these are name of the paper. Say for example, I just take anything. Environmental chemistry. Last one I am taking environmental chemistry, on which there are 36 modules, 36 lectures available. You see here, where are the module? Here you can see here. All the 36 lectures are there on the topic of what? Environmental chemistry. So we are talking about the subject environmental science. In environmental science there is a paper called as environmental chemistry, and in environmental chemistry there are 36 different topics on which video lectures are available. Say for example I am interested in getting to something, knowing something about wastewater treatment. So I am just clicking wastewater treatment. These things are available on the internet sir. आप यहाँ पर जा करके कभी भी जब भी आपको थोड़ा टाइम मिले देख सकते हैं ये कैसा होता है.
तो देखिए सर यहाँ पर है क्या, तो हम लोग बात कर रहे थे कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हमने लिया था टॉपिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो ऑन द टॉपिक ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वी डू हैव द रीडिंग मटेरियल्स व्हिच आर अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट यहाँ पे जाकर देख सकते हैं, रीडिंग मटेरियल्स हैं, इंट्रोडक्शन, सेडिमेंटेशन, जो भी चीजें हैं यहाँ पर। सो ऑल द रीडिंग मटेरियल्स आर अवेलेबल फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स ओवर हियर। और क्या है सर, उसके बाद लर्न मोर, इफ द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, दे कैन refer to these resources which are available over here. After that, we are seeing self learning. You just see here some video lecture. I was talking about this video lecture. So video lecture on the topic of wastewater treatment is available over here, which we can be access to it. Simply see here. तो आप देख रहे हैं सर, ये वीडियो है जो कि अवेलेबल है। इसमें प्रोफेसर साहब विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मैप्स, सिमुलेशंस एंड एवरीथिंग, he is trying to explain you how we can treat the waste water. So I mean to say, on waste water treatment there is a video lecture which is available over here. Either you can see it or you can refer these lectures, video lectures, to the students, to the concerned students I mean to say, and that is freely available, free of cost. इसके लिए किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता है। So such resources, educational resources I mean to say, are freely available, and that's why they are known as educational resources. तो इसी तरह से बहुत सारे टॉपिक्स पर सर यहाँ पे है, आप जा करके आप अपना देख सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये तो है OER की बात कर रहे हैं। तो इन OER व्हाट हैपेंस ओवर सर, कि मान लीजिए कि आपने किसी टॉपिक पे अपने स्टूडेंट को रेफर कर दिया कि जस्ट गो एंड सी ऑल दीज थिंग्स। से फॉर एग्जांपल आई एम ट्राइंग अबाउट केमिस्ट्री में कुछ भी ले लीजिए सर, bio inorganic chemistry. In bio inorganic chemistry there are certain things over there, oxygen carrier. So in oxygen carrier, on any topic I have taken earth science, I have taken over there earth science, some materials are there, say placer deposits are there. I don't know what these topics are there. So say for example, if you are interested in watching a video on that, you can see that video and even you can learn, or if you want to refer these videos to your students, you can refer to the student, they can see the video and learn from there. But one thing is that whenever the student is watching the video and he or she has some queries in his or her mind, उनके मन में कोई शक है, सुबह है, कुछ पूछना चाहते हैं, if they have any doubt during while they are watching the video, so there is no one available to clarify the queries or the doubts of the students during the lecture. I mean to say, in case of OER, hand holding supports to the students are not available. स्टूडेंट देख रहा है वीडियो, देखने के बाद उसको लगा कि सर इसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, उसको कुछ पूछना चाहता है किसी टॉपिक के बारे में, तो then there is no support, hand holding support, no teacher support are available to clarify the doubts of the students or to address the queries of the student which have arisen while he was watching the video. तो इससे होता क्या है सर कि अब लड़का वॉच कर रहा था, एक वीडियो देख रहा था, अब उसके मन में एक सवाल आया, कुछ पूछना चाहता है, there is nobody over there. अब जब समझ ही में उसको आगे नहीं आ रही बात, तो then the students loses the interest and he will not continue watching the video over there. अब नहीं कंटिन्यू करेगा तो फिर उसकी लर्निंग नहीं होगी. For smooth learning or effective learning, it is necessary that the student watches your video from the very beginning to the end. Then only the effective learning will happen. Then how we can compel the students to watch the video from the very beginning to the end? That is the more important question, sir. कि वो हम जब वीडियो मेरा स्टार्ट करे बच्चा तो शुरू से लेकर के आखिरी तक देखे. I mean to say that the student must be attentive towards your lecture or towards your video.
while he is watching the video or listening the video, whatever he is doing, then only the effective teaching and learning will happen. We might have experienced these things in our classroom as well, sir. ये classroom में जब हम होते हैं तो आप देखेंगे sometimes the student is sitting in the class, but due to any reason he is physically present in the class but mentally he is away from the class. सब कुछ सोच रहा है, कहीं पे उसका ध्यान है, he is not very much attentive towards your lecture. आप उससे खड़ा होकर के पूछें कि what was the last sentence I have uttered, तो वो लड़का लास्ट सेंटेंस नहीं बता पाएगा सर आप. Though he was physically present in the class, sitting on the very front bench पे बैठा हुआ था, लेकिन still he is not able to reply. सर हम नहीं सुन पाए. सुन नहीं पाए का मतलब नहीं है, सुन रहा था लेकिन उसका ध्यान कहीं और था. He was not attentive towards yourself. तो आप देखिए, though the student is physically present in the class, he is sitting in the very front bench, he is sitting in front of you, but he is not getting your point. Why? Because he is not attentive to your class. Sometime आपने देखा होगा कि कोई लड़का है, थोड़ा सा आप पढ़ा रहे हैं, जिस वक्त आप बात कर रहे हैं, जो व्याख्यान दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, उस वक्त खिड़की से बाहर देख रहा है. खिड़की से बाहर देखने का मतलब है कि he is not attentive towards you, and if he is or she is not attentive towards the teacher, then the learning process will not be effective. वो सीख नहीं पाएगा सर. उसका आप उससे पूछ लीजिए कि क्या अभी मैंने कहा, क्या पढ़ा रहे थे, उसको पता ही नहीं, क्योंकि though he was present physically in the class but not attentive, he was looking somewhere else, और उसका ध्यान कहीं और भी था. तो as far as the face to face amount of teaching is concerned, वहां पर as a teacher we do have a lot of leverages. हमको बहुत सारे टेक्निक आते हैं कि बच्चे का ध्यान हम अपने तरफ कैसे आकृष्ट करें. Say for example, if Raju is looking outside the window, हम कह सकते हैं, राजू कहाँ देख रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम इधर देखो. हम यही बात बोलते भी हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ है. ध्यान का मतलब हम चाहते हैं कि while I am delivering as a teacher, while I am delivering the lecture, the student must be attentive towards me. Then only the effective learning or teaching and learning process will be more effective. तभी स्मूथ हो पाएगा. और ध्यान आकर्षित करने के बहुत से तरीके हैं इनटू फेस टू फेस मोड ऑफ टीचिंग. लेकिन इन ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग, अभी जैसे आप सभी लोगों ने लॉग इन किया हुआ है, आई डोंट नो हु इज डूइंग व्हाट. कुछ लोग चाय पी रहे होंगे, कुछ लोग श्रीमती जी से बात कर रहे होंगे, कुछ अपना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ मोबाइल फोन देख रहे होंगे, एंड समबडी आर अटेंटिव एज वेल. तो जो अटेंटिव होगा लेक्चर में वो कुछ सीख पाएगा, और जो अटेंटिव नहीं होंगे नेचुरली ही विल नॉट लर्न. और यहाँ पर इन ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग आप बेबस हैं. हम आपसे नहीं कह सकते हैं कि डॉक्टर सबीना ट्राई टू बी अटेंटिव टुवर्ड्स मी, और जय श्री कुमार आप मेरे तरफ देखें. ऐसा नहीं हो सकता. यहाँ पर लिमिटेशन है. और इफ द स्टूडेंट्स, ये लिमिटेशन और भी बढ़ जाता है, इफ द स्टूडेंट्स इज ट्राइंग टू लर्निंग, ओईआर के केस में आपका वीडियो देख रहा है, तो हाउ द वीडियो विल टेल द स्टूडेंट. यहाँ तो चलिए हम कह भी सकते हैं कि आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपना अपना वीडियो आप लोग ऑन कर लें. चलिए वीडियो ऑन कर लिया, कम से कम सबका चेहरा मैं देख रहा हूं तो लग रहा है कि चलिए आप मेरे तरफ देख रहे हैं. इतनी सी बात तो चलिए यहाँ पर है. लेकिन इफ द स्टूडेंट इज लर्निंग समथिंग फ्रॉम ओईआर, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, एंड ही इज वाचिंग अ वीडियो, तो अभी हम लोगों ने तय किया था कि to have effective and smooth learning, it is necessary that the student must watch the video from the very beginning to the end. तो कैसे very beginning to the end student देखे, हम उसको कैसे बाध्य करें इस बात के लिए कि once the student start watching the video, he should finish it, then only he will run. ऐसा हम कर नहीं सकते हैं. और ऐसा करने के लिए क्या चाहिए आपको? क्वालिटी वीडियो चाहिए. हम लोग आज बात कर रहे थे क्वालिटी वीडियो. तो सर क्वालिटी वीडियो क्या होता है, उसका एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं. आजकल के टाइम पे देखते होंगे सर कि इट हैज बीन बिकम ए न्यू नॉर्मल, फैशन हो गया है कि बच्चा रोता है तो अम्मा क्या करती है, उनको हाथ में पकड़ा देती है, माँ जी उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देती है. जैसे ही मोबाइल उसके हाथ में आता है और बच्चा खुश हो गया. 1 मिनट, 1 मिनट. हाँ, प्लीज कंफर्म, एम आई ऑडिबल? सर आई वाज इन ए कॉल. सुन पा रहे हैं सर आप हमें? प्लीज Yes. जी.
Yes, sir. हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि वीडियो में कैसे हम बच्चे का ध्यान अपने तरफ आकृष्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि बच्चा अगर आप उसके हाथ में पकड़ा दीजिए मोबाइल फोन, तो रोना वोना भूल जाता है, खाना पीना सब भूल गया और हंसने लग खुश हो गया बच्चा। अच्छा, इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि उसको पढ़ना भी नहीं आता है, लेकिन आप देखिएगा कि वो टच को कर करके यूट्यूब खोल लेगा, यूट्यूब को लगा करके अपना मन का पसंद का कार्टून खोल लेता है, एंड वंस द कार्टून इज प्लेइंग, अब वो पूरा तन्मयता से पूरी ध्यान लगा करके उसका पूरा ध्यान कार्टून पे रहता है और ही इज एंजॉयिंग द कार्टून। देखिएगा उसके चेहरे पे हंसी भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, हंसी के भाव आ रहे हैं, खुश है। अच्छा, आप उसे थोड़ा सा मोबाइल फिर हाथ से पकड़िए, खींचिए उसके तरफ, फिर स्टूडेंट स्टार्ट्स क्राइंग, दैट स्टूडेंट स्टार्ट्स क्राइंग। होता क्या है सर वो बच्चे के साथ? अच्छा, अब छोड़ दीजिए तो आप देखिए कि बिल्कुल शुरू से अंत तक वो वीडियो को देखता रहेगा। आई मीन टू से दैट वीडियो व्हिच द चिल्ड्रन इज वाचिंग। किसी का माइक्रोफोन ऑफ हो गया, प्लीज इसको स्विच ऑफ कर लीजिए। हाँ, योर माइक्रोफोन इज अनम्यूटेड, प्लीज योरसेल्फ। डॉक्टर प्राची, प्लीज, प्राची 89, डॉक्टर प्राची, ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो खैर हम लोग बात कर रहे थे कि वो बच्चे का आप बच्चे से मोबाइल लीजिए तो फिर रोना शुरू कर देता है, दे दीजिए तो आप देखिएगा कि बड़ा तन्मयता से ध्यान पूर्ण माने ध्यान मग्न होकर के वो वीडियो देखने लग रहा है और वीडियो शुरू से आखिर तक वो देखता है। तो दैट इज द definition or that is the example, I mean to say that is the sample for a quality video, जिसको बच्चा शुरू से लेकर के कहां तक देखे, आखिरी तक। तो आपको भी whenever you're trying to make an educational video, we should make in such a way that educational video should be so engaging, इतना engaging होना चाहिए कि अगर लड़के ने एक बार स्टार्ट कर लिया उसको देखना, तो उसमें ऐसी ऐसी चीज है कि उसको आखिरी तक बिना देखे नहीं छोड़ेगा। I am taking another example, sir, just to give you an example of quality video, then I will come back to the topic. आप लोगों ने बहुत पहले, से फॉर एग्जांपल 20 इयर्स अगो आपने कोई फिल्म देखी होगी। से फॉर एग्जांपल हम किसी एक फिल्म का नाम लेते हैं, शोले नाम है मान लीजिए फिल्म का, या मुगले आजम नाम है फिल्म का। 20 साल पहले आपने देखा होगा, लेकिन आज भी आपको उसके बहुत सारे डायलॉग्स, बहुत सारे सीन अभी भी याद होंगे। और इस दौरान 20 साल के अंदर आपने बहुत सारे फिल्में देखी होंगी, 100 से ज्यादा, उसमें किसी का नाम भी याद नहीं होगा बहुत सारी चीजों का। तो डायलॉग और सीन की बात तो छोड़िए, बहुत सी चीजें आपको याद भी नहीं होती। देन just try to analyze what is the difference between these two films, जिसको हम लोग सुपर हिट फिल्म कहते हैं या फ्लॉप फिल्म कहते हैं। क्या डिफरेंस है सुपर हिट में फ्लॉप में? सुपर हिट फिल्म में क्या है कि whenever you enter into the cinema hall, 3 घंटे आपके कैसे बीत जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। That movie is so engaging that it completely attracts your attention towards itself, और आप उसी में मगन हो जाते हैं और 3 घंटा आपका कैसे निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। एंड व्हेनेवर यू कम आउट ऑफ द, अरे 3 घंटा निकल गया, बड़ा अच्छा फिल्म था यार, बहुत अच्छा, यू बिकम पार्ट ऑफ दैट मूवी, आई मीन टू से वो इतना एंगेजिंग होता है। तो दैट इज द सक्सेसफुल फिल्म, और उसको लोग बोलते हैं सुपर हिट हो गया। अनदर कैटेगरी ऑफ फिल्म्स आर देयर, आप सिनेमा हॉल में गए, ड्यू टू एनी रीजन दैट मूवी फेल्स टू अट्रैक्ट योर अटेंशन टुवर्ड्स इट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द मूवी। ड्यूरेशन का मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे तक अपना वो अट्रैक्ट आपको नहीं कर पाता है। दैट कैन नॉट एंगेज योर अटेंशन, आपको एंगेज नहीं कर पाता ड्यू टू एनी रीजन। हो सकता है कि डायरेक्टर की कमी रह गई हो, एक्टर की कमी हो, सिनेमेटोग्राफी की कमी हो, फोटोग्राफी की कमी हो, किसी वजह से हुआ। तो और आप 15 मिनट के अंदर आपको लगता है कि दैट मूवी इज वेरी बोरिंग, यू जस्ट कम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल। 10 लोगों से भी आप कहते हैं अरे मत जाना, बेकार की फिल्म है, एंड दैट सच काइंड ऑफ फिल्म गेट्स फ्लॉप। फ्लॉप का मतलब है कि वो जिस मकसद के लिए बनाया गया था उतना कामयाबी उसको नहीं मिल पाई। बट नन ऑफ द डायरेक्टर मेक्स द फिल्म टू बी फ्लॉप। क्यों फ्लॉप हो जाती है सर? कि वो किसी वजह से ड्यू टू द लैक ऑफ स्टोरी लाइन होगा, या डायरेक्शन की कमी होगी, या फोटोग्राफी अच्छी नहीं होगी, क्वालिटी वीडियो आई मीन टू से नहीं था। तो क्वालिटी वीडियो का क्या डेफिनेशन है? द क्वालिटी वीडियो मस्ट बी एबल टू अट्रैक्ट और मस्ट एबल टू एंगेज योरसेल्फ फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द मूवी और फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो। जो भी है, 10 मिनट का है, 5 मिनट का है, 3 घंटे का है, उसके लिए आपके ध्यान को एंगेज करके आपको एंगेज करके रखे। ऐसा अगर वीडियो आप बनाते हैं देन इट विल बी नोन एज क्वालिटी वीडियो। और जैसा कि हम लोगों ने देखा 20 साल पहले भी हमने एक वीडियो देखा जिसको शोले कह रहे हैं, वो भी वीडियो है सर, वीडियो है, या मुगले आजम फिल्म है, कोई भी है, वो अभी तक याद है। तो ऐसा ही लड़कों के साथ होता है। अगर आप अपने एजुकेशनल वीडियो को ऐसा बनाते हैं, अपने टॉपिक पे या अपने किसी कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं, एंड दैट इज एंगेजिंग एनफ जिसको स्टूडेंट शुरू से आखिर तक देख लेता है, तो बस समझिए कि आपका काम हो गया। आपका काम हो गया का मतलब एज ए टीचर यू आर सक्सेसफुल इन योर अटेम्प्ट इन एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट और इन मेकिंग द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विच यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू देम। तो ये हो जाता है सर। तो ये क्वालिटी वीडियो है। अब फिर बात आती है कि सर ये क्वालिटी वीडियो हम बनाएंगे कैसे? यहाँ पर बात आती है कि हाउ वी कैन प्रोड्यूस क्वालिटी वीडियो। तो क्वालिटी वीडियो सर बनाने के लिए
हमें और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप फिर बोलेंगे कि हम तो सर इस बात की ट्रेंड नहीं है ना। तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि ठीक है, वी हैव स्टार्टेड ए प्रोजेक्ट विच वाज नोन एज OER, और उस तरह का एक एग्जांपल था EPG पाठशाला बनाया, लेकिन उसमें कुछ कमियां पाई गई। कमियां ये थी कि देयर वाज नो हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं था। दूसरी बात ये है कि ठीक है, वो डिफरेंट टॉपिक्स पे तो है, लर्निंग के लिए है, उसमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं था। इफ यू हैव वॉच्ड द वीडियो, देयर इज नो प्रोविजन फॉर द सर्टिफिकेशन। अच्छा, वो अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस हैं, वो कंप्लीट कोर्स नहीं है। इन OER there are more than 4,000 videos on various topics. They are not in the form of a structured course. एक कोर्स के फॉर्म में नहीं है सर। कोर्स का मतलब होता है कि जो हम लोग कोर्स पढ़ा रहे हैं अपने यहाँ पर, से फॉर एग्जांपल वी आर टीचिंग ए कोर्स इन दिस सेमेस्टर। किसी सेमेस्टर में एक कोर्स आप पढ़ा रहे हैं, एक पेपर आप पढ़ा रहे हैं, तो उस पेपर का एक सिलेबस होगा। उस सिलेबस में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 या 15-20 टॉपिक होंगे विच यू नीड टू कवर ड्यूरिंग द कंप्लीट सेमेस्टर। उसको हम एक कोर्स कह रहे हैं सर, है ना। तो एक अनदर एग्जांपल इज देयर। तो जो कमियां पाई गई OER में, the government has tried to overcome that deficiencies or that demerits, and another concept was introduced which is known as massive open online courses. उसको हम लोग सर कहते हैं massive open online courses. So what happens in case of MOOCs? MOOCs is not a video lecture on any one topic. It is a collection of various video lecture on certain topics which is part of a course. तो कहने का मतलब है कि अच्छा ठीक है, कोर्स है, आप बता रहे हैं किसी एक कोर्स का नाम ले लीजिए किसी का। से फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की बात करते हैं तो मेडाइवल इंडिया मान लीजिए एक पेपर है कि मेडाइवल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो मेडाइवल इंडिया में आप उसमें हो सकता है 15, 20, 25 टॉपिक होंगे। तो हर टॉपिक पर सर एक लेक्चर है उसके, और द कंप्लीट we do have a complete video lecture on different topics of medieval India. So once the student wants to take this course, he can go to the SWAYAM platform. He or she can enroll in this course which is known as medieval India. उसमें enroll कर सकता है। enroll करने के बाद वो कोर्स 3 महीने का मतलब इफेक्टिवली एक सेमेस्टर, इफेक्टिवली 3 महीने होते हैं, 12 वीक का कोर्स होता है। तो 12 वीक तक वो कोर्स चलेगा, and during this period of time the student will be provided certain video lectures on various topics. उसका असेसमेंट भी होता रहेगा, इंटरनल, देयर इज प्रोविजन फॉर इंटरनल असेसमेंट्स एज वेल। तो वीडियो भी देखता रहेगा, उनका इंटरनल असेसमेंट भी होता रहेगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे द स्टूडेंट विल हैव टू अपीयर ऑन एग्जामिनेशन। सो देयर विल बी प्रॉक्टेड एग्जामिनेशन भी होगा। एग्जामिनेशन में अगर सक्सेसफुली आप पास कर जाते हैं, देन देयर इज ए प्रोविजन फॉर सर्टिफिकेशन। तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि दिस स्टूडेंट मिस्टर XY हैज कंप्लीटेड ए 4 क्रेडिट कोर्स ऑन द टॉपिक medieval India from SWAYAM platform which was launched during this period. इस तरह के आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, and the student will carry that certificate and will go to the university. और उनके यूनिवर्सिटी में the university is bound to reflect that grade which has been earned by successfully completing the course on the grade sheet of the students. So that grade will be reflected on the grade sheet of the student. तो जो स्टूडेंट को ग्रेड शीट मिलेगा उनके यूनिवर्सिटी से, उसमें लिखा हुआ 5 कोर्सेज हैं, एक सेमेस्टर में ये 4 कोर्सेज हैं। तो ये 4 कोर्सेज तो उन्होंने यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है, और ये एक कोर्स मेडाइवल इंडिया पे उन्होंने ऑनलाइन कंप्लीट किया है SWAYAM प्लेटफॉर्म से। दैट विल आल्सो बी रिटन ओवर देयर, सो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द ग्रेड शीट ऑफ द स्टूडेंट। दैट इज द मैंडेट ऑफ UGC। अगर किसी लड़के ने स्वयं से कोर्स किया है, then that credit will be reflected on the earned credit will be reflected on the grade sheet of the students. So that is how the things can happen over here. So I mean to say कि तो आपको सर हमें वीडियो लेक्चर अभी बहुत बनाने की जरूरत नहीं है। क्या है कि हमने स्वयं पर लड़के को रेफर कर दिया, वहां देखा कि लॉट ऑफ वीडियो लेक्चर्स आर अवेलेबल, लॉट ऑफ ऑन वेरियस कोर्सेज, and that has been made by different professors which are from IT or from MU, BHU, anywhere. So you can find over there. तो बोलिएगा सर ये कोर्सेज कहाँ हैं, नहीं है, थोड़ा सा इसका भी दर्शन हो जाए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो उसके लिए फिर आपको कुछ नहीं करना है, आप सर गूगल पे आ जाइए, और वहां पे आपको सिर्फ सर लिखना है स्वयं। आप स्वयं लिखेंगे, जैसे ही स्वयं लिखेंगे, ये देखिए सर पहला जो ऑप्शन है स्वयं सेंट्रल। इज माई स्क्रीन विजिबल टू सर ऑल ऑफ यू? स्क्रीन देख पा रहे हैं सर आप लोग? Yes, sir. तो ये स्वयं सेंट्रल को सर आप क्लिक करेंगे, जैसे स्वयं सेंट्रल क्लिक करेंगे, ये स्वयं का देखिए यहाँ पर माने ये है, क्या कहते हैं, होम पेज आ गया आपका। इसमें ऑल द कोर्सेज, यहाँ पे देखिए सर ऑल द कोर्सेज। तो स्वयं
में जितने भी कोर्सेज इस वक्त ऑफर हो रहे हैं उनके नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पड़े हुए हैं सर, सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सर इतने सारे कोर्सेज हैं। आई मीन टू से कि in every semester, इनका सेमेस्टर होता है सर, there are 2 semesters, one is from January to June, another semester start from July to December, 2 सेमेस्टर में अनाउंस करते हैं। and for every semester SWAYAM launches around 700 or 800 courses in every semester। तो हर सेमेस्टर में 600 से 700 नए कोर्सेज क्या करते हैं सर, ये लॉन्च करते हैं इसमें हर सेमेस्टर में। इन दिस सेमेस्टर विच इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम जुलाई 2022 से स्टार्ट होने वाला है, उसमें स्वयं ने मोर देन 1300 कोर्सेज सर क्या किए हैं, लॉन्च किए हैं ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर देखिए सर लिखा हुआ है अपकमिंग, अपकमिंग, अपकमिंग का मतलब दीज आर द कोर्सेज व्हिच आर गोइंग टू बी स्टार्टेड इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। नेक्स्ट सेमेस्टर का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स, है ना। और यहाँ है ऑनगोइंग कोर्सेज। ऑनगोइंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक सेमेस्टर इनका चलता है कहां से, जनवरी टू जून, तो ये तो ऑनगोइंग में है, जो जनवरी से जून में चल रहे हैं ये कोर्सेज। और आगे जो स्टार्ट होने वाले कोर्सेज हैं वो अपकमिंग कोर्सेज हैं। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ ऑल द अपकमिंग कोर्सेज ओवर हियर। तो से फॉर एग्जांपल हम नेशनल कोऑर्डिनेटर की बात करते हैं, यहाँ दीज आर द नेशनल कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या किया उन्होंने कि स्वयं ने जस्ट टू मेक द थिंग्स इजियर, उन्होंने कहा कि सर अगर मैनेजमेंट का कोर्स है तो हम मैनेजमेंट के कोर्स को मैनेज करने के लिए सारा जिम्मेदारी IIM को दे दिया है, IIM बैंगलोर को दे दिया उन्होंने। इसी तरह से टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज, बीटेक के कोर्सेज हैं, एमटेक के कोर्सेज हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी उन्होंने NPTEL को दे दिया सर। इसी तरह से BA नॉन टेक्निकल कोर्सेज के कोर्स बनाने हैं तो उन्होंने ये जिम्मेदारी दे दिया सर CEC को। इसी तरह से UGC को कुछ जिम्मेदारी दी एंड सो। तो दे हैव जस्ट मेड नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ओवर हियर। वन सच कोऑर्डिनेटर आर देयर INI में सर 2 लोग हैं, BHU एंड MU। यू कैन सी हियर द कोर्सेज व्हिच हैज बीन लॉन्च्ड बाय BHU एंड MU इन दिस कैटेगरी फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो आप देख सकते हैं सर यहाँ BHU के प्रोफेसर और MU के प्रोफेसर, दे हैव लॉन्च्ड सेवरल कोर्सेज ओवर हियर। मैं आपको एक अपने यहाँ का कोर्स दिखा देता हूँ, डेटा साइंस यूजिंग पाइथन। से फॉर एग्जांपल आप देखिए सर, ये डेटा साइंस यूजिंग पाइथन एक कोर्स है दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय प्रोफेसर फैसल अनवर एंड प्रोफेसर मोहम्मद नदीम। दे आर फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड राइट नाउ टिल नाउ ये कोर्स स्टार्ट कब से होना है सर, यहाँ लिखा हुआ है द कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 22 ऑफ जुलाई से भी स्टार्ट होगा। नाउ वी आर इन द 4th ऑफ जून में सर, वी आर इन द 4th ऑफ जून। तो अभी 1.5 मंथ से ज्यादा पड़ा हुआ और यहाँ पर मोर देन 1300 स्टूडेंट्स हैव बीन इनरोल्ड इन द कोर्स। तो लड़का क्या करेगा सर, विल गो टू द साइट एंड इफ ही फाइंड्स दैट ओके इन माय कॉलेज expertise are not available in the data science and Python, he or she can see the video over here. In this short video, introductory video, the teacher is trying to tell you what he or she is going to cover in this semester, in this course basically. So this is about the course. You see here, these are the things which will be covered during the program. These are meant for UG and PG level students. And this is the course layout. These are the topics which will be covered during the whole semester. ये पूरे 12 वीक तक जो भी सर कवर करेंगे, so that is written over there. This is about the instructor. So instructor is Faisal Anwar and Nadeem Saab, and how the course certificate will be awarded. तो कितने नंबर का इंटरनल एग्जाम होगा, कितने का एक्सटर्नल होगा, all the things are written over here. And if you successfully complete this course, a certificate will be awarded to you. यहाँ पर देखें सर, ये अपकमिंग है। अपकमिंग मैंने बताया विल बी स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट सेमेस्टर, फ्रॉम जुलाई से शुरू होगा। इलेक्टिव है, 12 वीक का कोर्स है। कैटेगरी है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के कोर्स है, 4 क्रेडिट का कोर्स है ये। UG एंड PG लेवल के स्टूडेंट्स को कर सकते हैं। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 22 ऑफ जुलाई एंड इट विल रन अप टू 11th ऑफ अक्टूबर तक सर चलेगा। और एनरोलमेंट कब खत्म हो जाएगा, एनरोलमेंट अभी तो स्टार्ट है सर, ये 29 जुलाई को एनरोलमेंट क्लोज हो जाएगा सर। द एनरोलमेंट विल क्लोज ऑन 29th ऑफ जुलाई। और एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन, इफ एनीबॉडी वांट्स टू रजिस्टर हिमसेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन, तो उसको एग्जामिनेशन 16 अगस्त तक एग्जामिनेशन के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। एंड एग्जामिनेशन, I mean to say the proctor final examination will be held on 25th of October को सर इनका फाइनल एग्जाम होगा। So these are the information about these courses. So all the courses which are launched by SWAYAM, they are in this form basically. That is the course page, introductory page. From here you can see the video and you can make an idea whether this course is suitable for you or not. तो यहाँ पर देखिए सर, ये कोर्स developed by you and in this video, the short video of 2 or 3 minutes, the professor is trying to tell you what he or she will cover in this course during this semester.
So I mean to say, in this short video, that professor are trying to tell you what we are going to cover in 12 weeks. If the student finds it relevant, they can enroll themselves. Otherwise, they can go for some other. अच्छा सर, ये तो हो गया सर MOOCs के बारे में. Now, after knowing all these things, say for example, you are interested. Let me come to my presentation, sir. So हम लोग बात कर रहे थे थोड़ा सा. Just we have a very quick go through from here. So we have seen EPG Pathshala over here, and another concept is there, that is for MOOCs. That is, MOOCs is known as massive open online courses. Massive means you can see here large number of students can be enrolled in the course. I will show you some courses where more than 20,000 students, 40,000 students are enrolled in single course. That's what is known as massive. It is open for all. Open for all means anyone can enroll in this course as far as the learning is concerned. तो कोई भी कर सकता है, maybe a graduate, maybe a past student, maybe a professional, maybe a housewife, anybody can do this course. No mandatory qualification is required. Candidate person is not essential, I mean to say. It is fully online, that's why it is online, available 24/7, and it is a structured course content. That's why it is known as course. I have already given an example that, say for example, it is a course related to medieval India. So in medieval India, whatever topics are being taught during the semester, it will cover all the topics of the course. So if you complete this course of 4 credit or 3 credit or whatever credit is there, you will be awarded a certificate on that this student has completed this course of 4 credit by from SWAYAM platform. I have one question. Please go ahead. Sir, SWAYAM पर या ये MOOCs में, if there is no means anyone can do this course. If a 8th class student wants to do, he can also do. उनके साथ भी है. आप NCERT के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो स्कूल लेवल के लिए भी है. अगर उनके इंटरेस्ट का यहाँ पे लगता है कि if the student finds उनको पाइथन सीखना है, सर जैसे पाइथन जो है 8th बिल्कुल सर 8th क्लास का लड़का भी सीख सकता है. नो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन. ओके सर. और ये क्रेडिट्स जो हैं, जब वो जाएगा ग्रेजुएशन में 4 क्रेडिट्स, तो ये वहाँ पे ऐड होंगे? नहीं, वो उसका एक प्रोसेस है. दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन कि वो क्रेडिट कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा. जी. If the student successfully completes, he will be awarded a certificate. But yes, how the university will acknowledge these credits, how the university will transfer these credits to a graduate student or to anybody, for that we do have a mechanism. वो mechanism मैं आपसे भी बात करूंगा कि कैसे credit transfer होता है सर, है ना? Thank you sir. उसके लिए कुछ rules and regulations हैं, that I will tell you later on. 1 minute please. Hello. Yes, I was we are in this slide. So we were discussing what is the difference between madam, is it clear? Your query has been addressed. Am I audible? Please confirm. Am I audible, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine. So I was discussing what is the difference between OER and MOOCs. I have already told you that in OER, what happens basically, there is no teacher support or hand-holding support for the student. I mean to say, if the student has any query, there is nobody available to address the query of the student. While in case of MOOCs, hand-holding support is always there. Teachers are present in any form. So if the student has any query in the mind or any query, the query are addressed basically. The doubts are addressed by the teacher, which are available in case of MOOCs. तो पहली बात तो ये है कि MOOCs में hand holding support है. So if a student watching the video or during any point of time, he or she has any query in their mind, that query will be addressed by the teacher. Number one. Another thing is that at the end of the day, if the student successfully completes this course, there is a provision of certification. उसको एक certificate भी मिलेगा कि that student has completed this course successfully of 4 credits and like that. So that is the difference between OER and MOOCs.
I have already told you where the MOOCs courses are available. So SWAYAM is a platform basically. So we are talking about SWAYAM. So SWAYAM is nothing but it is a platform on the internet. A platform hai where we can upload various massive open online courses, various courses which are available online. For that, the terminology is that MOOCs. So MOOCs are nothing but the courses which are available on the SWAYAM platform in the online mode. So MOOCs, there is a full form of SWAYAM, and like everything is written over here. You can go to all these things. National coordinator. I have already told you that just to make the thing simpler, they have divided the task to different bodies. हमने बताया आपको कि जैसे इंजीनियरिंग से कोर्स आप बना रहे हैं रिलेटेड बीटेक एमटेक, तो एनपीटीएल नाम की एक संस्था है, उसको उन्होंने कह दिया कि भाई ये सारे प्रपोजल एनपीटीएल के पास आप भेजिए, योर प्रपोजल विल बी स्क्रूटनाइज्ड ओवर देयर एंड दे विल फैसिलिटेट हाउ टू डेवलप ऑल दीस कोर्सेज. सिमिलरली यूजीसी क्या कर रही है? यूजीसी भी एक नोडल बॉडी है, नेशनल कोऑर्डिनेटर किसके लिए? नॉन टेक्नोलॉजी पीजी कोर्सेज, जैसे एमए इकोनॉमिक्स, एमए हिस्ट्री. नॉन टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी कोर्स विल बी सीन बाय एनपीटीएल. तो एमए हिस्ट्री है, एमए इकोनॉमिक्स है, एमए इंग्लिश है, इसके लिए कोर्स आप बना रहे हैं, तो कौन है इसके लिए नेशनल कोऑर्डिनेटर? यूजीसी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा. सिमिलरली बीए इकोनॉमिक्स, बीए हिस्ट्री से रिलेटेड कोर्स बना रहे हैं, बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए फिजिक्स, तो कौन करेगा इसको? सीईसी नाम की एक संस्था है, दैट इज ए नोडल बॉडी ऑफ यूजीसी. तो कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल एजुकेशन नाम की एक संस्था है, वो इसको देखेगी. सिमिलरली आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स बना रहे हैं तो इग्नू देखेगी. स्कूल लेवल के कोर्सेज आप बना रहे हैं तो एनसीईआरटी देखेगी, एंड सो एंड सो. तो इसी तरह से को नेशनल कोऑर्डिनेटर हम लोग कहते हैं सर. अच्छा, अब कोर्सेज कहाँ अवेलेबल है मैंने आपको करके दिखाया भी. बीएससी क्लासेस के लिए सर. हेलो जय श्री कुमार, बीएससी के लिए सर. क्या सर? बीएससी क्लासेस के लिए कहाँ? स्वयं बीएससी स्टूडेंट के लिए सर. जय श्री जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, थोड़ा सा माइक्रोफोन. सर पूछ रहे हैं कि बीएससी के लिए कहाँ पर? हाँ, बीएससी के लिए सर सीईसी में दिखाता हूँ, अभी दिखाते हैं. बीएससी सीईसी है सर, नॉन टेक्नोलॉजी कोर्सेज है ना, तो नॉन टेक्नोलॉजी को सीईसी नाम की संस्था जो है हैंडल करती है. जितने भी कोर्सेज हैं स्वयं के 4 क्वाड्रेंट में होते हैं, एंड आई हैव इन्फॉर्म्ड, आई हैव बीन ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड बाय प्रोफेसर खान दैट सम प्रोफेसर हैज डिस्कस्ड ऑल दीस थिंग्स क्वाड्रेंट विद यू बेसिकली. के क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि 4 कंपोनेंट होते हैं. जितने भी स्वयं कोर्सेज हैं दे आर अवेलेबल इन 4 कंपोनेंट्स बेसिकली. 1 तो वीडियो लेक्चर होता है, हर टॉपिक पे वीडियो लेक्चर होगा. दूसरा होता है स्पेशली प्रिपेयर रीडिंग मटेरियल. अभी ओईआर में दिखाया था नोट्स जो थे, क्लास नोट्स जो रीडिंग मटेरियल अवेलेबल होते हैं सर, वो दिखाया था मैंने आपको. तो वो कहलाता है कि वो होना चाहिए, रीडिंग मटेरियल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए. कि कभी कभी स्टूडेंट पढ़ के समझना चाहता है तो रीडिंग मटेरियल्स मस्ट बी अवेलेबल इन द प्रिंटेड और डाउनलोडेबल फॉर्म, किसी भी फॉर्म पे हो तो उसको पढ़ ले. तीसरा कंपोनेंट उसका होता है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट और क्विजेज. तो हमने बताया टाइम टू टाइम स्टूडेंट का हम लोग नॉलेज चेक करते रहते हैं कि वेदर द स्टूडेंट इज लर्निंग और नॉट. उसके लिए टाइम टू टाइम हम क्विजेज हैं, असाइनमेंट्स हैं, तो उस तरफ कंडक्ट करते रहते हैं जस्ट टू चेक द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट. और फोर्थ एंड फाइनल जो क्वाड्रेंट है उसको हम लोग कहते हैं ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, वेयर द स्टूडेंट कैन पुट देयर क्वेरीज एंड दैट क्वेरीज विल बी आंसर्ड बाय द टीचर और बाय पीयर फेलोज व्हिच आर पार्ट ऑफ दिस कोर्स. तो ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, ये हर चीज में 4 सब क्वाड्रेंट होते हैं. Apart from SWAYAM, we do have other popular MOOCs प्लेटफॉर्म. कहने का मतलब सिर्फ SWAYAM एक प्लेटफॉर्म का नाम है, उसके अलावा बहुत से और प्लेटफॉर्म हैं जहां पर MOOCs कोर्सेज इंस्टॉल कर सकते हैं. जैसे कि कोर्सेरा नाम से एक प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे वहां पर MOOCs कोर्सेज अवेलेबल हैं. ओपन एडीएक्स के नाम से है, यूडेमी के नाम से है, यूडासिटी इज अनदर प्लेटफॉर्म, फ्यूचर लर्न इज देयर, खान एकेडमी इज देयर. सो आई मीन टू से देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स व्हिच आर अवेलेबल, बट SWAYAM इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड. इंडिजिनियस इट हैज बीन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये प्रोजेक्ट है और इसको यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है. आई मीन टू से, तो आप अगर कोई कोर्सेज करेंगे तो देन द यूनिवर्सिटी इज बाउंड टू respect the grades which you have earned by completing these course on the SWAYAM platform. I mean to say, तो उसको उसी का ग्रेड ट्रांसफर होगा. अगर आप कोर्स एरा से करके आएंगे और बोलेंगे कि इसका ग्रेड ट्रांसफर होना चाहिए तो ग्रेड ट्रांसफर नहीं होगा सर, है ना. उसके लिए जरूरी है कि स्वयं से आप करेंगे. नाउ आई कम टू द पॉइंट. ओके फाइन, अब आप बात करना चाहते हैं सर कि अब ठीक है सर, आप MOOCs वगैरह की हम लोग बात कर रहे थे हम लोग, तो आप बताइए सर कि जैसे हम स्वयं कोर्स डेवलप करना चाहते हैं तो सर हम कैसे डेवलप करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए. तो स्वयं के बारे में हम लोग बात करते हैं. पहले स्वयं यहाँ पे देख लीजिए आप सर, ऑल कोर्सेज की बात कर रहे थे. सर ने हमसे पूछा बीएससी के कोर्सेज कहाँ मिलेंगे, तो बीएससी के बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं सर यहाँ पर. आप देखते जाइए, यहाँ बहुत सारे कोर्स हैं. आप नाम बताइए, जैसे कि यहाँ सर्च भी आप लोग कर सकते हैं, देख करके सर्च कर लीजिएगा. नेशनल कोऑर्डिनेटर मान लीजिए हम लोग सीईसी के कोर्स देखते हैं.
देखिए सर सीईसी के सब कोर्सेज हैं, अब इसमें केमिस्ट्री है या जो भी चीजें हैं आती होंगी, फिजिक्स है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो आप देख लीजिए यहाँ पर सर बहुत सारी चीजें हैं, जो भी बीएससी से फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी चीजें हैं, ये लॉट ऑफ कोर्सेज विच आर अवेलेबल ओवर हियर। यहाँ से आप सर ढूंढ सकते हैं सब, ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सर हाँ सर एनिमल बिहेवियर एंड क्रोनोबायोलॉजी का कोई बुक्स मिलेगा? एक्चुअली देखना पड़ेगा सर, ये वो ऑनलाइन भी ये देखना पड़ेगा सर, यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है ना, सही है ये देखिए सर्च का ऑप्शन है, यहाँ जाकर के देखना पड़ेगा सर, है ना। इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑल द कोर्सेज आर अवेलेबल। हमने कहा आपको कि हर सेमेस्टर में 600 से 700 नए कोर्सेज क्या करते हैं, स्वयं अपलोड करती हैं हर सेमेस्टर, और वो सारे कोर्सेज यहाँ पड़े हुए हैं, तो आप इसमें से ढूंढ सकते हैं। आपने कहा एनिमल, क्या कहा सर, एनिमल बिहेवियर, क्या कहा? एनिमल बिहेवियर एंड क्रोनोबायोलॉजी। अभी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी मिल रहा है, बिहेवियर पे तो एनिमल बिहेवियर एंड क्रोनोबायोलॉजी, इसका कंटेंट मिलता ही नहीं सर। हाँ तो आप बना सकते हैं सर, फिर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, मैदान पूरा खाली है। एनिमल बिहेवियर पे शायद यहाँ नहीं है अवेलेबल, है ना। एनिमल साइकोलॉजी पे कुछ मिला सर, फिजियोलॉजी है, सॉरी एनिमल फिजियोलॉजी, नहीं एनिमल बिहेवियर का इसमें सॉरी डिडंट ऑफ एनिमल बिहेवियर पे नहीं है सर, है ना, इस तरह से। तो खैर आई मीन टू से कि नहीं है तो हम लोग के लिए मैदान साफ है, हम लोग चाहें तो इस पे हम कोर्स डेवलप अपना बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। यस सर। तो अब सर अगर मान लीजिए कि वी आर इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग ए कोर्स, कि हम अपना कोर्स बनाना चाहते हैं, तो हम कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए सर जरूरी है कि आप कुछ नहीं करें, आप स्वयं पे जाइए, यहाँ पर लिखिएगा सर स्वयं EOI लिखेंगे सर, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये देखिए सर स्वयं EOI में सबसे पहले प्रपोजल फॉर कोर्स डेवलपमेंट यहीं पे दिख जाता है सर आपको, सबसे पहला वाला जो दिख रहा है आपको, है ना, प्रपोजल फॉर कोर्स डेवलपमेंट। इसको आप क्लिक करेंगे तो एक साइट खुल करके आ जाएगी सर, ये कहलाता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का साइट है। देखिए स्वयं का है ये, आप यहाँ सारी बातें लिखी हुई है सर, स्वयं का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, क्या है नहीं है, स्कोप ऑफ वर्क लिखा हुआ है सर, ये आपको क्या क्या करना होता है। तो जाहिर सी बात है जब भी कोर्स आप बनाएंगे तो जो भी टॉपिक्स है उससे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स होने चाहिए। दूसरे क्वाड्रेंट में आपको बताया था मैंने कि लर्निंग रिसोर्सेज यानी टाइप मटेरियल होना चाहिए जिसको स्टूडेंट पढ़ सके, कोर्स मटेरियल। तीसरा क्या चाहिए सर आपको, डिस्कशन फोरम होना चाहिए जहां पर लड़कों के क्वेरीज वगैरह आंसर किए जा सके। और चौथा क्वाड्रेंट है कि असेसमेंट, क्विजेज, प्रॉब्लम्स होने चाहिए जिससे टाइम टू टाइम आप उसका क्या कर सकते हैं, लड़के का असेसमेंट कर सकते हैं, नॉलेज के असेसमेंट कर सकते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट होने चाहिए। हु आर एलिजिबल फॉर सबमिटिंग देयर प्रपोजल सर, यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेंट should be a faculty member in a duly recognized college में होना चाहिए, holding a PhD degree and having a minimum of 5 year teaching experience होना चाहिए। यही लोग सर एलिजिबल है अपना कोर्स बनाने के लिए, ठीक है सर। The faculty employed in university college would be required to submit the consent letter of the host university for offering the online course। ऑनलाइन कोर्स अगर कर रहे हैं तो आपके होस्ट यूनिवर्सिटी का कंसेंट लेटर भी होना चाहिए, एंड तो NOC वगैरह होना चाहिए। इसका एक प्रोसेस है सर, हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या गाइडलाइन है सर, तो गाइडलाइन ये है सर कि स्वयं गाइडलाइंस लिखा हुआ है, स्वयं गाइडलाइंस को क्लिक करके आप देखिएगा सर, तो इसमें पूरा आ जाएगा जो आप वीडियो लेक्चर बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स कैसे होने चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन इन दैट सर। दूसरा सर स्वयं रेगुलेशन की हम बात कर रहे थे सर, देख रहे हैं स्वयं रेगुलेशन की बात कर रहे थे हम लोग 2021। तो ये स्वयं रेगुलेशन की कॉपी पड़ी हुई है, दिखा देता सर, देख लीजिए स्वयं रेगुलेशन की कॉपी पड़ी हुई सर यहाँ पर। तो सारी बातें सर यहाँ लिखी हुई हैं जो हम लोग कर रहे थे। देखिए हमने यहाँ पर कहा था आपसे कि इसको अगर पढ़ सकते हैं, देख पाइए सर, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द पेरेंट शैल गिव द इक्विवेलेंट क्रेडिट वेटेज टू द स्टूडेंट फॉर द क्रेडिट अर्न्ड वाइड ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज थ्रू स्वयं प्लेटफॉर्म। यानी कहने का मतलब स्वयं प्लेटफॉर्म से अगर उसने कोर्स किया है तो उसके पेरेंट यूनिवर्सिटी को उसका आदर करना पड़ेगा, वेटेज देगा। और उसके आगे भी देखिए लिखा हुआ साफ साफ, नो यूनिवर्सिटी शैल रिफ्यूज एनी स्टूडेंट फॉर क्रेडिट मोबिलिटी ऑफ द कोर्सेज अर्न थ्रू स्वयं प्लेटफॉर्म। कहने का मतलब है कि स्वयं प्लेटफॉर्म पे अगर उसने 4 क्रेडिट का कोर्स किया है तो उसके ग्रेड शीट पे ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या करता है सर, यूजीसी कह रही है कि आप अपने रूल्स रेगुलेशन में अमेंड कर लीजिए अकॉर्डिंगली। अभी तो नहीं आप दे रहे हैं कि लड़का स्वयं करके आ रहा 4 ग्रेड, लेकिन अब ये यूजीसी का रेगुलेशन आ गया है तो इसके लाइट में आप अपने ऑर्डिनेंसेस को या रूल्स एंड रेगुलेशन को अमेंड कर लीजिए। आपके डिफरेंट बॉडीज से पास कराना पड़ेगा, एकेडमिक काउंसिल होती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, बीओएस स्टडी सो जो भी है उससे पास उस करवा लीजिए, अपने रूल को अमेंड कर लीजिए। इफ द स्टूडेंट विल कंप्लीट ए कोर्स फ्रॉम स्वयं, वी विल रिफ्लेक्ट दैट grades that credit earned by the स्वयं courses on the grade sheet of the student। ये आपने करना होता है सर। तो इसका एक प्रोसेस है सर, हम लोग अभी देखेंगे। खैर हम बात कर रहे थे आगे, तो बोलिए सर ये तो क्या, अच्छा स्वयं में हम डेवलप करेंगे तो हमें क्या फायदा होगा ये टीचर सर।
तो बोले सर आपको फायदा ये होगा कि आपका नाम हो जाएगा, देखिए ना जैसे यहाँ पर कोर्सेज का नाम हो रहा ना, ये देखिए ये साहब एमयू के साथ हैं प्रोफेसर और इन्होंने कोर्स डेवलप किया है, तो हम आपके इंस्टीट्यूशन का नाम होगा, आपके कॉलेज का नाम होगा, अच्छा आपका भी नाम हो जाएगा, आप भी हमेशा के लिए इंटरनेट पे आ जाएंगे सर, अमर हो जाएंगे यहाँ पर हमेशा के लिए। तो बोली सर तो सर ठीक है सर, फाइनेंशियल कुछ बताइए, फायदा होता है या नहीं होता है? तो बोली हाँ फाइनेंशियल भी फायदा होता है। एक कोर्स आप डेवलप करेंगे, एक कोर्स का मतलब समझ गए सर, एक सेमेस्टर का, तो उसके लिए देखिए यहाँ लिखा हुआ फाइनेंशियल नॉर्म्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ मूक्स फॉर स्वयं, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट जो है 13.5 लाख रुपए देती है सर, 13.5 लाख रुपए, 13.5 लाख रुपीज फॉर डेवलपिंग वन कोर्स। वन कोर्स का मतलब आप समझ गए होंगे, एक सेमेस्टर का कोर्स जिसमें 60 लेक्चर होंगे, ये होगा सो जो भी होंगे। तो खैर तो ये सब देखिए लिखा हुआ यहाँ पर, हमारा लेटर नहीं है, ये सर मिनिस्ट्री ऑफ HRD का लेटर है, और इसमें देखिए 4.5 लाख रुपए इस काम के लिए और 9 लाख रुपए इस काम के लिए, वीडियो प्रोडक्शन के लिए, कुल मिलाकर के 13.5 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट देती है एक नया कोर्स बनाने के लिए मूक्स पे। ठीक है सर, और इसमें से आप बहुत खर्च करेंगे सर, खर्च करना पड़ेगा ना आपको, कहा कि वीडियोग्राफर लेना पड़ेगा, टेक्निकल पर्सन हायर करना पड़ेगा, एडिटिंग के लिए देखना पड़ेगा, तो बहुत खर्च करेंगे आप। लेविसली भी खर्च करते हैं तो 3 लाख रुपए खर्च करेंगे, 4 लाख, 3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, बस ज्यादा खर्च नहीं होता। बाकी जो पैसा बचा 10 लाख रुपया वो आपका है सर। तो एक सेमेस्टर में एक कोर्स बनाइए सर, दूसरे सेमेस्टर में दूसरा कोर्स बनाइए, एंड यू कैन अर्न अप टू 10 लाख रुपीज पर सेमेस्टर सर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही सर कि नहीं आ रही? यस सर, यही बात Yes, sir, इसी के yes. जरिए 4 व्हीलर खरीदा जा सकता हाँ है। बिल्कुल सर, वही हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग गरीब टीचर होते हैं, अच्छा हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इनकम तो सर होता नहीं है, हम लोग अच्छा काम, इसमें सर देखिए फायदा ही फायदा है ना हमारा। एक तो आप नेटिजन बन गए सर, हमेशा आपका नाम अमर हो गया वहां नेट पे। दूसरी बात ये होगी कि सर आपके इंस्टीट्यूट का जो है परसेप्शन बहुत अच्छा हो गया, अच्छा साहब फला कॉलेज के टीचर हैं, इन्होंने बहुत अच्छा कोर्स बनाया, और सब कुछ अच्छी अपनी जगह पे है। अच्छा दुनिया के स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट हो रहे हैं आपके नॉलेज से। अभी आपने कहा सर एनएमएल बिहेवियर पे कोर्स नहीं है, तो प्रोफेसर साहब आप एनएमएल बिहेवियर पे कोर्स बना दीजिए, तो उससे देखिए कि कितने लोग है ना, ये एक्सपर्टीज नहीं है बहुत जगह, तो बहुत सारे लोग उसको पढ़ करके उससे बेनिफिट होंगे उस कोर्स से। तो सिटिंग एट योर ओन प्लेस, आप अपनी जगह पे बैठे बैठे पूरी दुनिया के लोगों को पढ़ा सकेंगे, और पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स आपके नॉलेज से या आपके एक्सपर्टीज से बेनिफिटेड हो सकेंगे। सो दीज आर द एडवांटेज। ये तो ठीक है सर, एक पहलू है। और दूसरा पहलू बोलिएगा सर हम लोग तो भूखे पेट ना भजन होए गोपाला, तो भूखे पेट तो नहीं होता भजन, तो उसके लिए देखिए यहाँ दिया गया सर 13.5 लाख रुपए, तो गवर्नमेंट भी इस चीज को रिकॉग्नाइज करती है और ये देती है सर ये पैसा। तो लेकिन सर ये सब प्रोसेस तो हमने अभी बता दिया, लेकिन डिटेल में हम लोग कभी बात करेंगे इसके नुआंसेस पे कि कैसे होती है नहीं होती है। तो ओवरऑल मैंने अभी व्यू आपको मैंने दे दिया, आगे चल करके हम लोग इस पे बात कर सकते हैं सर। अच्छा आप देखिए सर ये फंडिंग वंडिंग हो गई सर, फंडिंग के लिए बता दिया मैंने कहां से होगा। अब ये सर एक जल्दी से मैं 2 मिनट के अंदर आपको एक लाइफ साइकिल बता दूं ताकि सर क्लियर बात समझ में आ जाए सर, है ना। तो देखिए सर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी कोर्स प्रपोजल देना पड़ेगा। बोले हाँ सर कोर्स प्रपोजल वाला काम कहाँ था, रह गया था सर, वो मैं जल्दी से आ जाता हूँ यहाँ पे। हाँ सर यहाँ पे गाइडलाइंस दिखाया था मैंने। अब उसके आगे सर आ जाइए सबमिशन ऑफ प्रपोजल। अब आपको लगता है कि नहीं हम आई एम रेडी फॉर दैट, तो आप अपना प्रपोजल सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर सर एक साइट है, एक फॉर्म है, इसी के थ्रू आप कर सकते हैं सर। तो सबसे पहले आप बताइएगा कि यूजी लेवल का कोर्स है या पीजी लेवल का कोर्स है। से फॉर एग्जांपल यूजी लेवल का कोर्स है, किस सब्जेक्ट का कोर्स है सर, से फॉर एग्जांपल फिजिक्स का कोर्स है। तो फिजिक्स में भी बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं, देखिए लिखा हुआ मैथमेटिकल फिजिक्स, मैकेनिक्स। तो कोई जरूरी नहीं है कि इन्हीं टॉपिक से बनाए, इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स जिसपे अभी इमीडिएटली जरूरत है वो सब आइडेंटिफाई करके लिख दिया गया है, आप इसके अलावा भी अपने कोर्स बना सकते हैं। अच्छा सब कुछ कर दिया आपने, उसके बाद देखिए सर यहाँ पर एक बटन देख पा रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर सबमिटिंग द प्रपोजल। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो 2-3 पेज का सर एक फॉर्म खुल करके आ जाएगा, उसमें आपके डिटेल्स होंगे, आपका नाम होगा, आपके इंस्टीट्यूट का नाम होगा, कब से जॉब कर रहे हैं, कब से पढ़ा रहे हैं, सो एंड सो इस तरह की बातें पूछी जाएंगी। कोर्स का सिलेबस आप बता दीजिए क्या है, कितने वीक का होगा। इन सब चीजों को भरने के बाद आपको इसको सबमिट कर देना है, एंड योर प्रोजेक्ट विल बी रूटेड टू दैट नेशनल कोऑर्डिनेटर थ्रू योर यूनिवर्सिटी, आई मीन से थ्रू प्रॉपर चैनल। पहले अगर आपके प्रिंसिपल जो भी है, प्रिंसिपल हैं या वाइस चांसलर है जो भी हो, तो उनके थ्रू ये प्रपोजल आपका क्या होगा, यूजीसी में सबमिट होगा। यूजीसी सीआईसी जो भी आपके हो या एनपीटीएल में ये प्रोजेक्ट वहां जाएगा। जब आपका प्रपोजल जाएगा वहां पर एक कमिटी होती है सर, दैट कमिटी विल इवैल्यूएट योर प्रोजेक्ट एंड इफ इट इज फाउंड सुटेबल फॉर देम देन you will be sanctioned or your project will be approved and the amount will be sanctioned to you in different phases, I mean to say अलग-अलग फेज में अमाउंट आपको सैंक्शन हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है सर, जैसे कि बाकी प्रोजेक्ट होते हैं, डीआरएस का प्रोजेक्ट आप सबमिट करते हैं, ये करते हैं, वहां पर चांसेस बहुत कम होते हैं अप्रूवल वगैरह के। यहाँ पर सर अभी कंपटीशन बहुत कम है। तो अभी जैसे हमने देखा सर कि एनिमल बिहेवियर पे नहीं है, देयर आर अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स जिस पे बहुत सारे कोर्सेज नहीं है। अच्छा किसी पे अगर है भी तो भी आप बना सकते हैं सर, जैसे कि एनिमल फिजियोलॉजी पे हमने देखा है कोर्स है, आप चाहते हैं कि नहीं हम एनिमल फिजियोलॉजी पे ही बनाएंगे, आप बनाइए। द ओनली थिंग इज दैट यू विल हैव टू मेक अ जस्टिफिकेशन ओवर देयर कि सर हमारा कोर्स इस तरह से डिफरेंट है जो एग्जिस्टिंग कोर्स है, बस इतना स्पेसिफिकेशन आपको लिखना पड़ेगा सर। एंड यू कैन सबमिट इवन फॉर दोस फॉर व्हिच द कोर्सेज आर अवेलेबल, वो भी कर सकते हैं सर।
चलिए, तो खैर ये काम करने के बाद सर अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं मूक्स के लाइफ साइकिल को जल्दी से आपको बता करके काम करेंगे। सर कोर्स प्रपोजल एंड अप्रूवल आपने देख लिया, तो कोर्स तो आपने सबमिट कर दिया, आपका अप्रूवल हो जाएगा वहां। जब तक कोर्स आप सबमिट करते हैं, आप अपना कंटेंट डेवलपमेंट का काम सर शुरू कर दीजिए। कंटेंट डेवलपमेंट का काम, अपना कोर्स बनाइए, स्क्रिप्टिंग करिए। सर ने भी बताया कि अक्सर ने किसी प्रोफेसर ने आपको स्क्रिप्टिंग बताया होगा, तो कैसे स्क्रिप्टिंग करते हैं, कैसे है ना कंटेंट तैयार करते हैं, वो सब तैयार करें सर। इन द मीन टाइम आपको अपनी यूनिवर्सिटी से भी कंसेंट लेना पड़ेगा, है ना। अगर प्रिंसिपल साहब हैं तो प्रिंसिपल साहब, डीन साहब से या चेयरमैन साहब जो भी हैं, जो आपका थ्रू प्रॉपर चैनल है, उनकी आप एनओसी लीजिए कि हम करना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑल द फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी, तो आपको यहाँ से भी लेना पड़ेगा। और क्रेडिट ट्रांसफर के लिए सर देखिए ये लिखा हुआ है फॉर क्रेडिट, है ना। क्रेडिट ट्रांसफर के लिए एक रूल रेगुलेशन फ्रेम होता है, वो कैसे फ्रेम होगा हम लोग डिस्कस करेंगे सर कभी भी टाइम मिला तो। उसके बाद सर हो गया, आपने डेवलप कर लिया, कंसेंट ले लिया, उसके बाद कोर्स अनाउंसमेंट होता है, जो अभी आपको मैंने दिखाया सर, ये अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट अभी जो मैं आपको दिखा रहा था, ये सिंपली ये दिखा रहा था, ये कोर्स अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट का मतलब है कि दीज कोर्सेज विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम 22 जुलाई। तो ये इंट्रोडक्टरी पेज है सर। अभी यहाँ पर आपको कोर्स कुछ नहीं करना है, यहाँ लगा देखेगा, उसको समझ में आता है कि इफ इट इज मीन फॉर मी और इफ इट इज यूजफुल फॉर मी, देन ही सिंपली क्लिक द ज्वाइन बटन। उससे 2-4 इन्फॉर्मेशन उससे मांगेगा, अपना नाम बताइए, पता बताइए, कॉलेज बताइए एंड सो एंड सो, उसके बाद उस ज्वाइन हो जाएगा। अब वो लगा पूरा कोर्स कर सकता है, यहाँ पर सीख सकता है। तो ये सर इस चीज के लिए ओपन है कोर्स, आई मीन टू से। तो ये सर कर लिया आपने, ओपन हो गया, अनाउंसमेंट हो गया। उसके बाद स्टूडेंट इनरोलमेंट अभी मैंने दिखाया कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, जो कोर्स जुलाई से चलने वाला है, 2 महीने पहले वो कोर्स ओपन कर देते हैं सर हम लोग। तो जब ओपन हो गया तो यहाँ पर अभी लड़के एनरोल करेंगे, इसके लिए एनरोल कर लिया। तो 22 जुलाई से अब जब से ये कोर्स शुरू होगा, तब से कंटेंट अब उनको मिलना शुरू होगा वीकली बेसिस पे, एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द टीचर। अगर टीचर चाहता है कि डेली एक वीडियो लेक्चर मिले, तो डेली एक वीडियो लेक्चर मिलेगा। सम टीचर्स आर willingly that के all the 5 lectures of a week should be given to the student at once। तो जो भी तरीका आप बताएंगे, उसी तरीका से स्वयं प्लेटफॉर्म उस बच्चे को आपका वीडियो लेक्चर डिलीवर करना शुरू कर देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट थ्रू फोरम। तो फोरम एंड चैट पे आपका वीडियो देख रहा है, लड़के को क्वेरी आ रही है, क्वेरी का उसने क्वेरी लिख दिया, आपका काम एज ए टीचर है कि आप उस क्वेरी को एड्रेस कर दें। इसके लिए भी आपको सर पैसे मिलते हैं। तो ये तो सर डेवलपमेंट करने का 13.5 लाख बताया, बोलिए यही सब काम सर, ये क्वेरी जो एड्रेस करना है टीचर, मान लीजिए 10,000 लड़के हमारे हो गए, हम 10,000 लड़कों को करते रहेंगे, मेरा पूरा दिन निकल जाएगा। तो नहीं, इसके लिए फिर क्या है सर कि यूजीसी अलग से पैसा देती है सर, डेवलप करने के लिए 13.5 लाख, और आपका कोर्स कंडक्ट करने के लिए, यानी उस सेमेस्टर में चलेगा तो अप टू एन इनरोलमेंट ऑफ 500 स्टूडेंट 1.5 लाख रुपए देती है सर। कहने का मतलब आपके स्टूडेंट अगर 500 इनरोल हुए आपके कोर्स में, तो 1.5 लाख रुपए देगी आपको कोर्स रन करने का पूरे सेमेस्टर में, जिसमें आपका काम रहेगा स्टूडेंट के क्वेरी को हैंडल करना, क्वेश्चन जैसे अगर आपने कुछ दिया है एवेल्युएट करना, यानी कहने का मतलब कि स्टूडेंट इंटरेक्शन से रिलेटेड चीजें आप करते रहें। अगर 500 से ज्यादा है, मान लीजिए 1000 बच्चे हो गए, तो फिर 1.5 लाख रुपए आपको देगी सरकार सर, यानी 3 लाख रुपया। बोलिएगा सर और ज्यादा हो गया तो हर 500 पे आपको 1.5 लाख रुपए मिलता चलेगा। अगर 2000 मान लीजिए समझने के लिए, इफ 2000 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन योर कोर्स, देन द गवर्नमेंट विल गिव यू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मींस 6 लाख रुपीस एडिशनल आपको देंगे। तो बोले सर इतना पैसा हम करेंगे क्या? नहीं, सब पैसा आपको नहीं रखना है, आपको टीचिंग असिस्टेंट रखना है सर, है ना। एक टीचिंग असिस्टेंट रख लिया आपने, बोला कि भाई आप रोल नंबर 1 से 500 तक के क्वेरीज को हैंडल करेंगे। दूसरा टीचिंग असिस्टेंट रख लीजिए, उनको 1.5 लाख रुपए आप दे दीजिए, उनको बोलिए 501 से लेकर के आप 1000 तक आप हैंडल करेंगे। तो हर 500 को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट आपको पैसा देती है, विच यू कैन यूज फॉर हायरिंग टेक्निकल असिस्टेंट्स विच विल असिस्ट द स्टूडेंट ड्यूरिंग द कोर्स। उसके बाद सर एट द एंड ऑफ द डे प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन होगा सर। प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन का मतलब जैसे फाइनल एग्जामिनेशन होता है, तो फाइनल एग्जामिनेशन होगा लड़के का, और 70% का वो होता है, 30% का सर इंटरनल असेसमेंट होते हैं। और जब लड़का पास कर गया तो उसको क्रेडिट जो भी हुआ, वो क्रेडिट की एक सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगी। क्रेडिट का सर्टिफिकेट लेकर के अपने यूनिवर्सिटी में जाएगा, और अगर उसकी यूनिवर्सिटी ने नियम कानून को ठीक कर लिया है, पास कर लिया है, तो उसके ग्रेड शीट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर अभी अडॉप्ट नहीं किया है, प्रोसेस में है, तब सर नहीं हो पाएगा। सो दिस इज द होल लाइफ साइकिल ऑफ द मूक्स कोर्स विच आर अवेलेबल ऑन स्वयं प्लेटफॉर्म। सर इतना के बाद मैं थोड़ा सा ओपन होता हूँ क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। आपके मन में अगर सर कुछ सवाल है तो जरूर पूछिए, एक एक करके हम आपका जवाब सकते हैं। प्लीज सर। सर अगर 700 स्टूडेंट्स एनरोल हो तो आपको सर 1.5 लाख और 1.5 लाख, यानी कि आपको 3 लाख रुपए मिलेगा। हर 500 के ब्लॉक पे 1.5 लाख रुपए है, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर साहब का देखिए 13,000 है ना, इनका 1300 है, तो इनको मैंने इनको मिलेगा 1.5 into 3, 4.5 लाख रुपए। तो ये क्या करेंगे, हर 500 के लिए अलग अलग टीचिंग असिस्टेंट रख सकते हैं कि वो 500 लड़कों का क्वेरीज है या बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप कोर्स चल रहा होगा, तो उसको हैंडल करने के लिए आप
टेक्निकल असिस्टेंट रख सकते हैं, टीचर बहाल कर सकते हैं, रख सकते हैं, जिनको आप 1.5 लाख रुपए देंगे एक सेमेस्टर के लिए। और बताइए कोई भी आपके कुछ हो सवाल पूछिए सर, सवाल पूछिए तो हम लोग फिर ज्यादा डिस्कशन कर पाएंगे। Sir, प्लीज। sir, I'm visiting on SWAYAM CES and in subject section, very few subjects are indicating there. Education is कोई जरूरी नहीं कि वहां पर मेंशन हो, ये तो कुछ गैप एनालिसिस करके उन्होंने लिख दिया है कि ये चाहिए, इसके अलावा भी आप कोई भी कोर्स पे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। so, sir, other option is not there and without clicking any option. आगे बढ़िए, फॉर्म पे जब जाएंगी ना, फॉर्म पे जब जाएंगी तो वहां पर आप लिख सकती हैं, वहां पर ऑप्शंस हैं फॉर्म पे। Okay, thank you, sir. हाँ, आप कर सकते हैं। ये तो सिर्फ उन्होंने क्या किया है, एक गैप एनालिसिस किया हुआ है कि इमीडिएटली दे नीड दिस काइंड ऑफ कोर्सेज। इसके अलावा भी देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच आर लेफ्ट ओवर देयर, और आप इसके अलावा भी बना सकते हैं कोर्स। जी बताइए आगे, एनी अदर क्वेरी? सर एक सवाल और था पिछले दिनों के, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इज अवेलेबल 24/7, या कोई डेट देते हैं कि तब तक आप अप्लाई करिए प्रोजेक्ट? नहीं सर, ये हमेशा के लिए अवेलेबल है। जैसे कि मान लीजिए आपने मिड सेमेस्टर में अगर दे दिया तो उसको आगे वाले सेमेस्टर में क्या करेंगे, वो कंसीडर कर लेते हैं सर, है ना, उसको रख लेते हैं। अभी जैसे सर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि जुलाई में जो कोर्सेज शुरू होने वाले हैं, इनका काम खत्म हो चुका है सर, ये सब डेवलपमेंट का काम चल रहा है। अब जो आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देंगे वो जनवरी 25 से जो कोर्स शुरू होंगे उसके लिए वैलिड होगा सर। कम से कम 4 महीने 5 महीने पहले दिए, सेमेस्टर शुरू होने से पहले। तो सेमेस्टर शुरू होता है, हमने बताया, एक जनवरी टू जून, दूसरा चलता है जुलाई टू दिसंबर। तो जनवरी वाले में अगर आप करना चाहते हैं तो बाय द एंड ऑफ जुलाई आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ सबमिशन दे दीजिए, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी अपना प्रपोजल सबमिट कर दीजिए। फ्रेंड्स कोई और सवाल हो तो बताइए, जिससे कि कंक्लूड कर सकें। वी हैव नेक्स्ट सेशन एट 5:30। फीडबैक बताइए, सर ने किस कदर नॉलेज आपके साथ शेयर की है स्वयं को लेके, और इट इज प्योरली स्ट्रक्चर्ड इन मैनी वेज कि बस आपको जस्ट क्लिक करते जाना है और इंफॉर्मेशन को फीड करते जाना है, और बस शुरुआत करनी है। सारी चीजें इतनी कस्टमाइज्ड हैं और हम लोग अवेलेबल हैं, सर अवेलेबल हैं, शुरुआत करिए। Thank you so much, sir, for being nice presenter, and you discussed wonderful knowledge with us, with the participants as well, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया है।